answer of that question which I gave you yesterday? So show me the answer. Let's begin with that. I gave them a question to find the moment of inertia of a structure where there were 4 different balls at the 4 corners and 4 different rods. How many of you have done it first of all? Bhul gaye. You tried, that is what I wanted. At least you tried. How many of you not tried? Be honest. Good. Very honest girl. But what I will do with this honesty? Please try next time. Okay, when question is given, we always expect that we'll do and we'll learn something out of that. So what is the answer, sir? नीचे जाइएगा और नीचे 764 upon उतना ही है, ठीक है? It is 764 upon ये वही है जो आप कह रहे हो. चलो ठीक है, you will try. Those who have not tried, you can try it again. Let's begin today with angular momentum. As we write linear momentum as mass into velocity, we can write angular momentum as a counter quantity of mass, which is I, and a counter quantity of velocity, which is omega. So angular momentum is I omega. However, as I told you yesterday, there will be another way of writing angular momentum in Cartesian system. Which is R cross P. Fine. Now, as we know, there is a law called law of conservation of linear momentum. Similarly, there is a law called law of conservation of angular momentum. What is that law? In absence of, if tau external is 0, then angular momentum will remain conserved. Okay. It's very interesting to understand this law as well as to use it for the practical purposes. Let's do it today in the beginning. Maybe for a few minutes we are going to first understand, and then we solve some problems based on the law of conservation of angular momentum. Suppose there's a particle and particle is moving along x-axis. Write down, all of you. There's a particle, the particle is moving along x-axis with velocity v, and the mass of the particle is m. Mass of the particle is m and the velocity of the particle is v. It is moving along x-axis with constant velocity. What is a linear momentum? Follow? mv. What is his angular momentum? देखिए कितने लोग जवाब देते हैं. What is its angular momentum? Exactly. सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा? About a point. कल की क्लास में मैंने जोर देके बोला था कि अगर मोई आपको जाननी है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि what is the axis of rotation. ठीक है? So if you want to find the angular momentum, you have to first hunt for a fixed point about which you want to find the angular momentum. So if I say that what is the angular momentum about the origin, then what is the answer? What is the angular momentum about the origin? Come on. क्या डिस्टेंस होगा? दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, कोई चीज छिपी नहीं है. Not mass, distance between the direction of motion and the point about which you
Because when you write r, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ. I wanted to explain you how to apply this r cross p formula and how to apply this I omega. If I want to apply this r cross p, I need to have the knowledge of r and p. P is already known. What is r here? What is r? Don't say radius. R is the distance of the point, fixed point जो आप, not from the origin, fixed point जो आपने choose किया है, from the line of the linear momentum, from the direction of the linear momentum. Tell me what is the distance? 0, isn't it? Because point is incidentally lying in the same line. So if a point lies on the same line, so what is the distance of the point from the line? 0. So the angular momentum is not there. Got it? But now if I ask you that what is the angular momentum about another point which is on y-axis of coordinates say a comma 0, sorry 0 comma a. What is the angular momentum? Angular momentum. It would be r cross p, that is a into mv. Got it? When the particle is here, this is a, fine, and this is the velocity. Incidentally, mv and a, they are at, and therefore product of momentum and the perpendicular distance. When the particle goes further, what is the distance? R. Now this is r, which is not a. If this is theta, then r becomes equal to, r कितना होगा? A will be r sin theta, sorry. Then a will be equal to r sin theta. If right now I apply formula of angular momentum r cross p, how do we write cross product of two vector? What is r sin theta? And therefore what is angular momentum? So the conclusion is if the point chosen is fixed, if that is not changing, and the linear momentum is also not changing, then angular momentum will remain throughout same. Okay? Naturally, this is what the law is also. Because if the momentum is not changing, one thing for certainly we can assure that there is no force acting. Because if the force could have been acting over there, the first thing the force could have done is it could have changed the linear momentum. This is what the Newton's second law is all about. But the momentum is not changing. That means force is not there. And if the force is not there, dare not to think of any torque. And if there is no torque, the angular momentum has to be constant. मेरा कान है, मैं ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, पकड़ में तो मेरा कान ही आएगा ना. तो angular momentum इसलिए constant आ रहा है r cross p वाले फॉर्मूले से, क्योंकि बॉटम लाइन क्या है कि there is no torque acting. ठीक है? Is it okay? कई चीजें बच्चों दिख जाती हैं, there is no torque acting, कहीं हमें जबरदस्ती समझना होता है और एक्सेप्ट करना होता है. जैसे बहुत दिनों तक मुझे कंफ्यूजन रहता था शुरुआत में कि यार कोलिजन में क्यों लोग बोलते हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग. क्योंकि एक परसेप्शन है सभी के दिमाग में कि कोलिजन में अच्छा खासा टक्कर हो तो रहा है, कह रहे फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो ड्यूरिंग द कोलिजन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acts, and since there is no external force acts, I can say there is no torque acting. So that means all those examples where there is a collision, okay, we can assume that the net external torque is not there, and therefore we can apply the law of conservation of angular momentum. Okay. However, in case if there is a torque acting, then probably we cannot apply the law of conservation of angular momentum. Angular momentum will change. Fine. How to solve such problem then? Please find alpha. Why? Because if there is a torque acting, there will be MOE of a body, there will be definitely alpha. And if you find alpha, angular acceleration, you can find omega, which will be time dependent.
Everybody is getting me? So if I get omega which is time dependent, I can always find angular momentum which is time dependent. As it is, I have accepted that angular momentum is not conserved. So I will be happy to find the angular momentum at whatever time you want. आप बोलो सर 10 मिनट बाद बताओ, मैं बोलूंगा ठीक है रुक जाओ 1 मिनट दे दो, जरा सांस लेने दो, 10 मिनट बाद ओमेगा निकाल लूंगा, अल्फा निकाल लिया मैंने ऑलरेडी. ठीक है, फाइन. और टिपिकल हो सकता है फोर्स या टॉर्क भी टाइम डिपेंडेंट हो. ठीक है, अगर फोर्स और टॉर्क भी टाइम डिपेंडेंट होगा तो अल्फा भी टाइम डिपेंडेंट होगा. ठीक है, तो वो तीनों इक्वेशंस हम भूल जाएंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टेन, क्योंकि वो इक्वेशंस वैलिड ही नहीं है. फिर हम एक चीज याद रखेंगे, कैलकुलस. ठीक है, और उस कैलकुलस के मेथड से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो आपने थोड़ा बहुत बेसिक सीखा होगा, हम किसी भी मोमेंट के लिए हम ओमेगा नए तरीके से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अप्रोच समझ में आ रहा है सबको? सो द बॉटम लाइन इज when you solve a problem of conservation of angular momentum, or even the case where there is angular momentum being asked, then please check it out whether there is an external torque acting or not. If there is no external torque acting, please go ahead, because you've got a now green signal for applying the law of conservation of angular momentum. If there is external torque acting, then please don't apply the angular momentum conservation law. Then please find alpha, please find the instantaneous value of angular velocity, and find the angular momentum at whatever time you want to find. ठीक है, is that clear? Should we attempt a problem? Now see. See this example, children. There is a rod lying. Write down all of you. A rod of length is lying. A rod of length L is lying on a frictionless table. Smooth table. A rod of length is lying on a smooth table like this. ठीक है? A pebble of mass m, maybe a small mass, you can call it pebble. A pebble of mass m moving with velocity v, it strikes the rod. It strikes the rod at one end. The rod is not fixed. The rod is not fixed. I said it's lying on the table. Okay, this strikes the rod and momentarily comes to rest. नीचे लिख लो. Number 1, it does not stick with the rod. Number 2, it sticks with the rod. Now try to understand what I'm trying to say here. This pebble is striking another body and the collision is taking place. Okay, because there is a collision, there is no external force acting. So we are actually having a case here where there is no external torque acting, and therefore not only linear momentum will conserve, angular momentum will also conserve. Any number of questions can be formulated with this example. Question हो सकता है, find the velocity of center of mass after collision. Okay, question हो सकता है कि how much time the rod takes to rotate itself by angle 30 degree, 60 degree, 90 degree या one complete. क्योंकि जब rod आगे बढ़ेगा, you know rod कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है, इस जगह नहीं है, मतलब ये रॉड ऐसे आगे बढ़ेगा.
क्योंकि फिक्स तो है नहीं। तो आपने नोटिस किया होगा क्या हो रहा है, इट इज नॉट ओनली ट्रांसलेटिंग and it has to be. Why? Because I said both the linear momentum as well as angular momentum will remain conserved. So it has to be translating now after collision, because linear momentum to conserve rahega. And why it is rotating? That's very interesting question. Rotation kahan se aaya? Was there any angular momentum before collision? ये तो एक पार्टिकल था, चल रहा था, ये तो एक रॉड था, चल ही नहीं रहा था. Where was the angular momentum? जरूर रहा होगा, अदरवाइज एंगुलर मोमेंटम आया कहां से? और ये आप अक्सर टेबल पे खाली पीरियड में कर सकते हो, पेन को आप हिट करके. पेन फाइट आप तो करते हो, बताने की क्या जरूरत है, आप सारे पेन फाइट करते हो, ठीक है. पेन पे जब हिट करते हो, एंड से यहां से हिट करते हो पेन को, तो पेन ज्यादा तेजी से रोटेट करते हुए, ठीक है. सेंटर पे मारते हो तो पेन ऑलमोस्ट ट्रांसलेट करता है, देखो मारने भी लगे, ठीक है. सो एंगुलर मोमेंटम अगर आया है तो जरूर रहा भी होगा. अब कैसे निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम? इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमको किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालना होगा, और नेचुरली 99 times out of 100 times the fixed point must be the point about which the rotation is taking place, क्योंकि उसी के अबाउट I निकालना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा. And we all know that it is going to rotate, the rod is always going to rotate. बताओ कौन बताएगा, कौन सी एक्सिस के अबाउट? Which point is going to be the point where the axis of rotation will pass? Center of mass. इसीलिए center of mass आपको इस चैप्टर की जस्ट पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है. कंक्लूजन, बॉटम लाइन इज, अगर कभी कोई चीज फिक्स नहीं है तो जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, और कहीं से पास कर ही नहीं सकता. हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुम ना पास करने दो उससे, तुम फिक्स कर दो तो तुम जहां मर्जी वहां फिक्स कर दो. लेकिन अगर तुम फिक्स नहीं करना चाहते, फिर भी रोटेशन चाहते हो, तो द नेचुरल चॉइस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. अब दोनों सिचुएशंस की दो अलग अलग सेंटर ऑफ मास हो जाएंगे. जब चिप जाएगा उसके साथ, व्हेन इट स्ट्राइक्स एंड डजंट स्टिक्स विद द रॉड, तब जो सेंटर ऑफ मास होगा तब वो कुछ और होगा. और जब ये स्ट्राइक करके नहीं, उसके साथ वो एम्बेडेड हो, यहां चिपक जाता है, तब जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कुछ और होगा, ठीक है. लेट्स डू बोथ द क्वेश्चंस. सबसे पहले करते हैं, लेट्स फाइंड, दोनों केसेस के लिए फाइंड velocity of center of mass. Find the velocity of center of mass. बताइए. VCM, बोलो. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ. When the collision was not there, what was the linear momentum? mv. After the collision, what would be the linear momentum? एक केस में, कौन से केस में? When it does not स्टिक. समझ आ गया? इससे VCM बताओ क्या आया? व्हाट इज VCM? mv अपॉन, ये तो आपने इसके पहले वाले चैप्टर में कई बार किया होगा, ठीक है. अब अगर ये स्टिक करता तो ठीक है, क्योंकि वो उसका हिस्सा हो गया तो उसका भी मास लेना होगा. सो अब नई सेंटर ऑफ मास क्या आता? VCM इज, दिस इज द केस व्हेन द पेबल इज embedded, when the pebble is sticks with the rod. इतना समझ में आया? फिर आगे बढ़ो, ठीक है. फाइन. नाउ
How to find the angular velocity? Angular velocity of the rod after collision. Angular velocity of the rod after collision. How to find it? We have to apply the law of conservation of angular momentum. As I told you, before collision, what was the angular momentum? Follow? mv into L/2. एक केस में, कौन से केस में? जब वो चिपकता नहीं है, क्योंकि जब चिपक जाएगा तो नेचुरली सेंटर ऑफ मास L/2 नहीं होगा, वो थोड़ा कुछ और होगा. क्या होगा वो आपको पता ही होगा, अपने कर रखा है सेंटर ऑफ मास, बट निकाल लूंगा. बट इफ आई राइट this as mv into L/2, this is when it does not stick. When it does not stick. I hope you understand. Now the same angular momentum will convert into I omega after collision. So L2 will be I omega. This is after collision. As there is a conservation, so L1 will be equal to L2. And when I equate I get mv L/2 is equal to I. Tell me I. I, आप बताओगे. Moment of inertia of the rod m L square by 12, क्योंकि स्टिक नहीं कर रहा है. ठीक है, रॉड का मास हमने कैपिटल M ले रखा है. So obviously L cancel, 2 6 are 12, so omega is 6 mv upon ml. ठीक है, समझ आ गया? I expect आप ट्राई करो when it sticks with the rod. सेम आंसर मुझे निकाल कर दिखाओ. ओमेगा निकालो. Find out. All of you try please. Find omega if the mass m sticks with the rod. All of you. We are doing a case where there is a rod. The rod is actually lying on a smooth surface and there is a pebble. Pebble is striking the rod. There are two situations. One, it strikes and doesn't stick with the rod. And the second case, when it strikes and sticks with the rod. In these two situations, we have to find the angular velocity omega. I have calculated the angular velocity in first case when it doesn't stick with the rod. You can take it. And you have to find the angular velocity when it sticks with the rod.
नया सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे ना, आता है सबको? जब स्टिक करेगा तो सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर में नहीं होगा, रॉड के चेंज हो जाएगा। किनको दिक्कत हो रही है सेंटर ऑफ मास नया निकालने में? हो रहा है किसी को? जिनको हो रहा होगा, मेरे लिए उनके लिए एक कंसेप्ट है जो मॉम के नाम से है। फुल फॉर्म होता है इसका ठीक है, किताब में नहीं है इसलिए सुन लो, सब लोग सुन लो। कुछ चीजें बुक में नहीं होती, लेकिन तो क्या हुआ, अप्लाई करोगे तो मजा आएगा। मॉम सेज दैट मॉम सेज मीन्स मम्मी नहीं, मॉम सेज दैट कि मोमेंट ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कभी सेंटर ऑफ मास जल्दी से निकालना हो तो मोमेंट का मतलब ऐसा मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ मास इज मास इनटू डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि किताबी चीज नहीं, इसलिए समझाने का तरीका भी मेरा थोड़ा वैसा है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको मजा आएगा अप्लाई करने में। तो मुझे अगर मोमेंट ऑफ मास निकालना आ गया किसी पॉइंट के अबाउट, तो मैं क्या निकालूंगा, मास इनटू डिस्टेंस। अब मैं कह रहा हूँ मॉम नहीं बदलता, मॉम नहीं बदलता मतलब मॉम चेंज नहीं होता। कैसे? सपोज करो ये एक मास है m1 और ये दूसरा मास है m2 और ये लेंथ है r, ये x है, ये r माइनस x है। आप लोगों को सिखाया गया होगा कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, कोई ओरिजिन मानकर कोई फॉर्मूला बताया होगा सर ने आपको, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, अगर n पार्टिकल है। मेरा कंसेप्ट मॉम का ये है कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट इसका मॉम निकाल लूं और उसी पॉइंट के अबाउट अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इसी पॉइंट के इसका मॉम निकाल लूं, तो दोनों का मॉम सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका मॉम m1 x विल बी इक्वल टू इसका मॉम m2। आप आराम से x निकाल सकते हो। पता लगा ये दोनों मासेस चेंज हो गए, मूव कर गए। आता है क्वेश्चन अक्सर कि इफ दिस हैड शिफ्टेड व्हाट इज द न्यू सेंटर ऑफ मास। कोई चीज और आके अटक गई, चिपक गई, व्हाट इज द न्यू सेंटर ऑफ मास। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप ये मॉम लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये अगर यहां कोई चीज आई और यहां m3 मास पर्टिकुलर डिस्टेंस में आ गया। ठीक है, अब सेंटर से एक साइड के जितने मासेस हैं उनका मॉम, सेंटर से दूसरे साइड के जितने मासेस हैं उनका मॉम बराबर कर दो। ठीक है, सपोज ये रॉड है, रॉड का खुद का सेंटर यहां होता है, एक मास यहां आ गया। अब नेचुरली सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, मान लो यहां शिफ्ट कर गया x। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मॉम निकाल लो, इसका मॉम जो ये मास है इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि अगर ये x है तो ये l/2 माइनस x होगा, और रॉड का इस पॉइंट के अबाउट मॉम विल बी इक्वल। ठीक है, यू कैन इजिली फाइंड x, करके देखो। देर इज अदर वे ऑल्सो डूइंग इट, किसी पॉइंट को ओरिजिन मानकर वो जो फॉर्मूला है m1 r1 प्लस m2, दिस इज ऑलवेज डन, नो प्रॉब्लम, बट द मेथड विल ऑलवेज मेक योर टाइम सेव। निकालो, बताओ कितना आया, सेंटर ऑफ मास कहां पर है।
बोलो, m into x mom of rod is equal to m into L by 2 minus x mom of the pebble. So mx is equal to ml by 2 minus mx, and therefore m plus m x is equal to ml by 2. ठीक है, x is equal to ml by 2 upon the new center of mass from the origin. यहां से एंड से निकालना होगा तो निकाल लेंगे आलू से. ठीक है, तो अगर ये यहां से x है, यहां से x है, तो यहां से कितना होगा L by 2 minus x, जब निकालने का. ठीक है, नाउ सी, अब आपको अगर नया सेंटर ऑफ मास पता चल गया, सी हाउ यू विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. Law of conservation of angular momentum about new center of mass. बोलो, when this pebble was moving with velocity v, what was the angular momentum about this point? Tell me. mv L by 2 minus, got it, is equal to ICM into omega, where ICM is the moment of inertia of the whole system about the center of mass. ICM निकाल लेंगे, क्योंकि इसीलिए तो कल थ्योरम वगैरह सीखा था. ठीक है, बता दो कैसे निकालेंगे. चलो कोई नहीं, देख लो. चलो बताओ आईसीएम, जिसको भी समझ में आया बताओ आईसीएम कैसे निकलेगा. इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमें पता है, इसके अबाउट निकाल लेंगे. कौन सा थ्योरम लगाएंगे? तो आईसीएम विल बी एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम. ये तो रॉड का था. पार्टिकल अगर स्टिक कर रही है तो पार्टिकल का भी लेना होगा, और स्टिक कर रही है इस समय. अब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा? समझ आ गया? ठीक है, x जिसने निकाल लिया है वो L by 2 x जहां जरूरत होगी निकाल लेगा. आईसीएम आ गया, ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड. मॉम देखो, ऐसे समझाऊं. सपोज करो एक ट्रॉली है. आई थिंक सर ने बताया होगा पिछली क्लास में. एक ट्रॉली है, ट्रॉली में यहां पर एक गड्ढा है और यहां पर एक पेंडुलम लटका हुआ है. ठीक है, ये पेंडुलम यहां से धागा यहां किसी ने कैंची से काट दिया, और ये जो मास है ये नीचे टपकता है, कई बार ऑसिलेट करके ऐसे ऐसे गड्ढे में आके गिर जाता है. क्वेश्चन ये है कि जब ये गड्ढे में गिरता है तो ट्रॉली कितना खिसक सकती है? एवरीवेयर फ्रिक्शन इज मिसिंग. देखो मॉम कैसे हेल्प करता है हमें क्वेश्चन करने में. अगर ये गड्ढे में गिरता है तो सपोज करो इस पेंडुलम से गड्ढे का डिस्टेंस L है. Naturally external force is not acting. There is no external force acting. Question. Just show me the question, but hold on, I'm answering. Let me explain this point first. Okay. Achha, I thought question is there. Okay, I will try. So, if there is no external force acting, there is no external torque acting, then naturally the momentum will remain conserved and all those. But now the question is not all those finding big things like angular velocity. Question is simply how much the trolley shifted. So if you see the question,
Question is trying to ask you only the movement, the distance. So if you find some strong technique of not indulging yourself into all those calculation work of center of mass finding and all that, then probably you can save a lot of time. वहां के लिए क्वेश्चन करते करते then I realized that कि कुछ नया कंसेप्ट होना चाहिए, किताब में है नहीं है तो क्या हुआ. And then I thought that एक मॉम का कुछ बनाते हैं, ठीक है. अप्लाई किया जब भी तो सही निकला, तो फिर बन गया कंसेप्ट. बता भी रहा हूं आपको. अब देखो मॉम से मैं कैसे इस क्वेश्चन को करूंगा. इसका सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टली नहीं बदलेगा. क्यों? क्योंकि पेंडुलम टूट कर नीचे गिरता है तो नेचुरली ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है. सो देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग. तो पेंडुलम के नीचे गिरने से वर्टिकल कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का बदल जाएगा. बदलना भी चाहिए क्योंकि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग. बट हॉरिजॉन्टल जरा मुझे बताना कैसे सेंटर ऑफ मास बदलेगा, क्योंकि देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग. और कोलिजन जब भी हो रहा होगा, इट्स गोइंग टू बी इंपैक्ट व्हिच इज इंटरनल, देयरफॉर द एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल. सो absolutely no doubt in our mind that there is no horizontal force acting, and therefore the coordinate of the center of mass, horizontal coordinate of the center of mass, will remain fixed. Now this is where the mom will be applied. That means moment of mass will remain same. But now it is visible, trolley के अंदर देखो ध्यान से, trolley के, it's visible that the bob gets shifted horizontally. And if bob is shifted horizontally, trolley will try to negate this movement in such a way that the horizontal coordinate of the center of mass will remain same. ठीक है? So if I assume that the trolley has moved a distance say x, wherever it has moved, किधर मूव करेगा तो I think आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा. बताना जरा किधर मूव करेगा. अगर पेंडुलम इधर, बॉल इधर गया है तो where the trolley will move? Opposite. तो सबको आता होगा, ठीक है? So if I assume that the trolley has moved x, ट्रॉली खुद तो जाएगा, उस मास को भी लेके जाएगा जो उसके ऊपर सवार है. अकेला तो जाएगा नहीं. इसका मतलब मॉम अगर मैं अप्लाई करूं तो इसने इसके मूवमेंट से मॉम क्या होगा, m into l. इस पेंडुलम का जो टोटल शिफ्ट हुआ उसका मॉम क्या होगा, m into l. मॉम मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस. ट्रॉली का मास, I have equated the mom only, and therefore the answer is, I can guarantee you, तुम्हें 5 मिनट लगेगा या 3-4 मिनट तो लग ही जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले से इसी आंसर को निकालने में. आएगा सेम आंसर. ठीक है? कहीं ओरिजिन लोगे, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट डिसाइड करोगे, x कोऑर्डिनेट डिसाइड करोगे, फिर फॉर्मूला m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. ठीक है? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप मॉम अप्लाई करके कर सकते हो. ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन आपको हो सकता है मिल भी गया हो. यहाँ पर एक मास रखा है, ये नीचे लुढ़कता है. जब तक ये नीचे पहुंचता है तब तक ये ट्रायंगल कितना मूव करेगा बता ला. ये यहाँ नीचे जब तक पहुंचता है, बताओ ये ट्रायंगल कितना खिसकेगा. यू कैन इजीली फाइंड यूजिंग द मॉम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हियर विल आल्सो नॉट चेंज. ठीक है? Boat में you are the part of the boat and you started moving in the boat. For a person observing you from the bank, the boat will move. हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे. Boat will not move alone. It will take you also along. And therefore, the mom of the boat will be not only mom of the mass of the boat into distance, mass of you as well as the boat. So we'll kind the mom, composite mom equal to the mom because of which the boat is moving. So naturally, had it not been your movement, boat वहीं रहा होता. So boat किस वजह से मूव किया? आपकी वजह से. तो आपका मॉम निकालूंगा पहले बोट के रिस्पेक्ट में, कितना आपने शिफ्ट किया अपने आप को, इक्वल टू मॉम ऑफ द बोट प्लस यू एज अ सिस्टम. ठीक है? वो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है. अब जरा आगे बढ़ते हैं. ये आई थिंक ये समझ में आ गया सबको. आईसीएम फाइन. सपोज करो वी हैव टू फाइंड द एंगल. एक क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड. सपोज वी हैव टू फाइंड एंगल रोटेटेड बाय द रॉड, द टाइम टेकन बाय द रॉड टू रोटेट अ पर्टिकुलर एंगल. कैसे निकालें? ये भी क्वेश्चन हो सकता है. फाइंड द टाइम टेकन बाय द रॉड टू रोटेट एन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री. ठीक है? नोट कर लो. In the previous example, calculate the time taken by the rod. Calculate the time taken by the rod
to rotate by an angle, say 60 degree. 60 degree, which will be how much? Pi by 6 radian. Now, how to pi by 3? Sorry, pi by 3 radian. Tell me how to find. Rod is started from here. It might have started its journey like this. Next movement. हो सकता है this is the situation when it has gone how much? 60 degree. But यहाँ से यहाँ जाने में definitely you have to find out the time with the help of the formula which link the angle, because angle दिया हुआ है 60. तो you have to first find the formula. It's very easy to find. See, हाँ जी, anybody? Omega पता चल चुका है. So omega is d theta by dt. So I can write omega dt is equal to 0 to theta c radian 0 to t. ओमेगा कहां से निकलेगा? प्रीवियस पार्ट चेक करो. इसके पहले वाला पार्ट आपने ओमेगा निकालने में इतना मेहनत तो किया तो था, इसीलिए तो किया था. वहां से ओमेगा आपका आ चुका है. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, चाहे वो स्टिक करता है चाहे नहीं करता है, दोनों केस में बता दिया कैसे ओमेगा निकालेंगे. एक बार ओमेगा निकल गया जिसको, यू कैन ऑलवेज लिंक ओमेगा विद द टाइम एंड एंगल. ठीक है. Is it okay, children? See, there are many examples, children, where the law of conservation of angular momentum, they are visibly appearing to all of us, and we should be quick enough to assess that this is the case of the law of conservation of angular momentum. But I have seen invariably that children get confused between the law of conservation of angular momentum and the linear momentum. I give you example, and I expect that you please tell me that which law is applicable. Suppose there is a soldier and the soldier is firing gun, a bullet, okay, putting the gun close to the shoulder. The soldier is firing the bullet, putting the gun with the help of, obviously he or she tries always a support from the shoulder either, or some rigid support, okay, because the gun has a tendency to recoil once the bullet is coming out. Which law is applicable here? Conservation of linear momentum or the angular momentum? Suppose I was walking on a road and there was absolutely fine weather. All of a sudden, the Delhi weather gone totally deadly and the rain is started, and then I used to normally hold umbrella in my hand, and suddenly I just opened the umbrella. But when I did it, when I opened the umbrella, incidentally, the surface where I was standing, that surface happens to be a turntable. Turntable, have you seen? Which turns around. And when I opened the umbrella, earlier umbrella I was holding, okay, maybe in my hand, and now I just opened the umbrella. So when I open the umbrella, will there be any change in the angular velocity of the turntable where I was standing? Yeah, angular velocity will remain same. And if it changes, then by what principle? How? What I have changed by opening the umbrella? What I have changed? Which physical quantity I have changed by opening the umbrella? R of what? My radius or the umbrella's radius? So you mean moment of inertia? Moment of inertia will change. Earlier the whole surface of the umbrella was synchronized to a particular line when the umbrella was not open. Now once you open it, the moment of inertia will change. Naturally masses have distributed little away from the axis. So if I is changed,
and it is my internal matter. I am doing it. I am opening, closing umbrella. So whatever force I'm applying to the umbrella, umbrella is doing the same to me. So as a whole system, me plus umbrella, there is no external force, no external torque acting. So naturally, by virtue of opening the umbrella, I have increased the moment of inertia, and therefore, definitely the angular velocity of the turntable will decrease. So there is nothing surprising for all of you to conclude that when a ballet dancer stretches her hands and legs like this, then naturally she is going to reduce the angular velocity which she normally holds while dancing. Okay. Whereas if she wants to accelerate herself or she wants to show a more angular velocity, then she might stretch herself very close to her body. Because by virtue of doing that, she is reducing the moment of inertia and therefore increasing the angular velocity. Easy to understand? If a cat or a cheetah, okay, or a jaguar, whatever, if they wants to take jump, in air, while they have to perform some maybe act, maybe some rotation, something like that, or even the somersault. The Olympic game you might have seen where there's if I try to perform like this and then they jump like this and then the number of time they rotate in air that before touching the water, before actually piercing into the water with a streamlined position, that actually gives the mark. The judges closely watch it. So they cannot just jump and then fall into the water as if before. So they have to just perform a lot of rotation. So number of rotation which they are performing, that increases by virtue of they synchronizing their body into a complete circle. Because by doing that, they reduces their moment of inertia and therefore omega will automatically increase. Okay? So there are so many other examples. During the जो आंधी आती है, क्या बोलते हैं आप लोग उसे? Tornado. और वो जो नहीं, what do you call that? जो पत्ते उत्ते सब एक साथ नहीं चलने लगते. There's a name of that. हाँ? हाँ, हिंदी में तो बाउंडर ही कहते हैं, बट हिंदी में बोलना नहीं चाह रहा था. चलो बाउंडर. Okay, but there's a name, some name that has got the velocity right at the center is very high. And if you get stuck someday, then probably it's a dangerously, tantalizingly close to, if not death exactly, then probably you will get a lot of rotation there. Your cloths are going to be turning around in such a way that you'll be almost unable to hold them because of the angular velocity being very high at the center. Okay. Whereas if you see, probably the leaves or the paper pieces which are little away from that particular center, they try to rotate, but in a while of doing the process of doing it, they sometimes they do rotate, sometimes they left out because the angular velocity is very less as we move away. There are many examples of law of conservation of angular momentum in practical life which we can apply. Okay. Let me ask you if you can give me any example other than what I have given. Be creative. Law of conservation of angular momentum. वो मत बताना जो मैंने बताया अब तक. Right from CBSE to your home, from your school to your kitchen, kitchen to your bedroom, bedroom to the playground. Any example? गेट खोलते हैं तो क्या होता है? कोई अंदर आ जाता है? Example दो. Okay, that rotor. So what happens there? Example should suggest the concept, na? So what happens there? When it rotates, water moves out. So where is the law of conservation of angular momentum? Bolo. Question is, give an example of law of conservation of angular momentum where angular momentum law is applicable. Practical life example. Answer of? Please.
कौन से फैन? सीलिंग फैन. Where is the torque acting? When the fan is rotating in full speed? I'm afraid no. Because when the fan is rotating at full speed, angular velocity remains constant. Let us assume that the government is giving us equal voltage supply, which is almost impossible. Not the fault of the government. Fault is actually lies in the supply process. Voltage keeps fluctuating. So don't blame the government for that. So assuming that the voltage supply remains constant, current remains constant, angular velocity has to be constant. Therefore, there's no torque acting. But if you switch it off or switch it on, okay, then probably there is a torque acting, and then since torque is acting, obviously the conservation of angular momentum is not applicable there. But as long as it is rotating in full speed, applicable, very much applicable. Example, हो सकता है, या कह सकते हो. I thought that there should be some there are questions like if suppose if I ask you that Earth consists of many layers, and out of many layers, some layers are actually in liquid form. Okay, like the core of Earth, they are magma of very high temperature and pressure. You must have learned this. So naturally, they are actually rotating with a huge amount of angular velocity. Why? Because they're being close to the center of Earth, their distance is less, therefore moment of inertia. So naturally, there's a lot of angular velocity. And that churning process, the result into tectonic movement, and the tectonic movement when gets surfaced, naturally earthquake results. Okay, and many times the question is, if Earth all of a sudden synchronizes half of its volume, what will be the new duration of the day? Okay, you might have seen. Naturally, the duration of the day will change by virtue of changing the moment of inertia. Omega will change. Okay, so let's move on, children. Now, the one more topic which I wanted to cover before I start doing the numericals is the rolling. Sir, जरा एक वो होगा दीजिएगा. Please open the text which I have brought. What is rolling? A case of translation and rotation together is known as rolling. There are two types of rolling. One is pure rolling, and second is naturally impure rolling. Easier said than done. But see how it's going to be difficult for all of us to understand. I will try my level best to explain you. Let's be, sir, इसके पहले, हाँ, छोड़िएगा, just go back. ये तो टेक्स्ट है. मेरा हैंड रिटन टेक्स्ट होगा. note 1, note 2, note 3. So I guess it's a note 4 and note 5. Either are note 3. It's a handwritten. हाँ, टर्न करिए. ऊपर और ऊपर. नहीं, आप पीछे एक पेज और, एक ये बाद में चाहिए होगा मुझे. 4, हाँ 4. Exactly. See, children, if there's a pure rolling, many times we have seen it. It's a very much probably an example which are very close to our routine life, because very time we see that the wheel rolling or things which we start on a table, they actually roll down and it stops certain distance after certain distance. But there are certain complications in the subject which I would like to explain you today. But before that, basics देख लेता हूँ सभी के clear है कि नहीं. Pure rolling के basics क्या क्या है देख लो.
If there is a pure rolling, there is a friction at the contact acting. I have shown the friction in the backward direction. Rolling is in the forward direction. Angular velocity, if there is omega, then the center of mass translates with velocity Vcm, which is equal to R omega. ये pure rolling की property है. ठीक है? A is the point of contact. B, C, D, they are three different points on the circumference of the body which is rolling. There is another diagram which shows that the topmost point, that is the C point, has the linear velocity double the velocity of the center of mass. That means it does not have the same velocity, linear velocity, as the velocity of the center of mass. We have to understand this. Because if I continue to do like that, then probably if I reach here, then what is the velocity of this point instantaneously? 0. And that's very true. So first we have to understand that. When there is a rolling, there is point of contact, and the point of contact does not move. I will show you, just see. I will show you how the point of contact does not move and it does move. Is it moving? Point of contact is moving, slipping. But it is not moving. Now it is not moving. So there's a difference between the point of contact moving and the point of contact not moving. Okay? अब आपको लग रहा है सर ये भी तो move कर रहा है, but the point of contact is not moving. So during the pure rolling, every time there is a contact, that contact becomes a unique contact. Maybe for a lifetime. Okay? Because the next time the contact point shifts some other place. Some other point on the rolling body comes in contact with some other point on the surface. Okay? Whereas when it slips, okay, the point of contact actually is moving with respect to that particular. So when there is a pure rolling, the point of contact momentarily is at rest. So if it is at rest, it's quite easy to understand. As we move, radius is increasing, and therefore linear velocity will increase. Why? Because omega will remain same. Angular velocity तो बदलेगा नहीं. ठीक है? ये तो सबको आता है ना. अगर मैं किसी भी रॉड को अगर मैं गिराता हूं, ऐसे यहाँ फिक्स है रॉड, तो जब भी रॉड गिरेगा, एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट का सेम होगा. क्यों? क्योंकि थीटा तो हर पॉइंट के लिए सेम होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट का अलग होगा. इसका 0, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और. ठीक है? इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई? ट्वाइस. क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? ऑब्वियसली उतना ही जितना कि बॉटम से सेंटर है. ठीक है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कभी अगर हमें प्योर रोलिंग में इसकी वेलोसिटी निकालनी हुई तो निकाल लोगे. ये एक स्फीयर है, प्योर रोलिंग कर रहा है, आपको मैंने इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है, कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड दिस वेलोसिटी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दी हुई है Vcm. फाइंड V, रेडियस इज R. इसका डिस्टेंस निकालो, यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो. ये R है, ये R है, तो ये कितना होगा? इसलिए अगर R के लिए वेलोसिटी है Vcm, तो R√2 के लिए वेलोसिटी क्या होगा? That is R omega√2. That means इस पूरे स्फीयर में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हुई तो आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होगा? डिस्टेंस. ठीक है? उस डिस्टेंस को R के टर्म में लिखना और वेलोसिटी निकाल लेना. ठीक है? Got it? Now there is another interesting point for the pure rolling, which will all of you must understand, and that friction does not do any work in pure rolling. But pure rolling is not possible without friction. That means if there is a smooth surface, the sphere will rather slip rather than to roll. तो एक बार तो मैं ये कह रहा हूं कि without friction rolling is not possible. दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि if there is a friction, yes, rolling will take place, but the friction doesn't do any work. इसका मतलब इसलिए वर्क नहीं हो क्योंकि वहां स्लिप नहीं हो रहा है.
You mean to say that since the point of contact is not sliding and therefore friction is not doing any work? Okay, then probably you need to answer me that how a rolling sphere comes to rest. Because if I believe all the facts written in the book and what the girl says and everything, probably if we believe everything, then probably we are dangerously stuck at a place where probably we might find almost no answer. That is how a rolling body comes to rest. Because coming to rest means it has lost its energy. And if the friction doesn't do work, I can guarantee you that no other force is doing any work. And if the work is not being done, how can there will be change in kinetic energy? Are we against the law of conservation of energy? I'm sorry, I cannot dare to. Nobody can dare to. And we all know that if a body is rolled, sooner or later it comes to rest. So how can a rolling body comes to rest if the friction doesn't do any work? And other forces will not do work, ये भी guarantee है कि normal reaction, perpendicular displacement ऐसे, तो perpendicular force तो वैसे work नहीं करता, ठीक है? Friction हम मना ही कर रहे हैं, normal reaction work कर नहीं सकता, mg कर नहीं सकता. What the work? Which force is doing the work? And if the work is not done, then where the kinetic energy goes? तो एक एक करके करते, ठीक है? एक एक करके करते, ज्यादा उलझाते नहीं. पहले ये समझते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं कि how friction doesn't do any work. It's very simple to understand that friction actually does here dubious role, double role. जैसे movies में hero करते हैं. And the double role of the friction is to be very interesting here. It might, you know, does work in one case positive, another case negative, and maybe the total work is coming out to be zero. So individually it might be doing, because in a pure rolling, don't forget that there are two motions simultaneously going on. Which are the two motions? Let's address them separately. ठीक है, माना कि pure rolling is the combination of these two, but separately, अलग-अलग सोचते हैं. So let us talk about the role being done by the friction in the translation. Is it doing any work? Yes, it is doing any work for the translation. Okay, because देखा जाए the sphere, actually sphere has moved. So friction is a force acting on at the bottom. Sphere has displaced itself. So if I assume that there is a displacement of the sphere delta s on the surface, then this sphere which has displaced a distance say delta s, sphere यहाँ आ जाएगा. This distance is delta s. What is the work done by the friction for the translation? Delta s into fr, negative. Why? Because displacement is in this direction, friction is in this direction, angle is, so the work done is, now this delta s will be displaced. Always delta s जो होगा वो तो आर्क का हिस्सा होगा ना. जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पहले यहाँ रहा होगा, सबको समझ आ रहा? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पहले तभी तो यहाँ आ गया ये, और ये पॉइंट ऑब्वियसली ये अब यहाँ कहीं चला गया होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं आ गया होगा, और ये वाला पॉइंट अब जब कांटेक्ट पे आ गया होगा. इसका मतलब डेल्टा एस यही तो है. इसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं, इसको डेल्टा थीटा मान लूं, इसको आर मान लूं, तो व्हाट इज डेल्टा एस? एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, सो आर्क विल बी एंगल इनटू रेडियस. गॉट इट? दैट मींस मैं डेल्टा एस की जगह क्या लिख सकता हूं? So this is the work done, okay, by the friction for which motion? बहुत बढ़िया, ठीक है, got it? Let's see how the work is done for the rotation, because rotation is also taking place. Tell me that is this friction going to enhance the angular velocity or reduce the angular velocity in the run? Please don't consider together, separately. अगर ये rotation होता और friction ऐसे लगता तो obviously this could have been increase or decrease angular velocity. Increase कैसे? क्योंकि ऐसे rotate कर रहा है और friction ऐसे लग रहा है. Imagine करो, ठीक है, कि rotation भी ऐसे हो रहा है और friction ऐसे लग रहा है. Naturally इसका जो torque होगा उसको उसी sense में घुमाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ work done होगा rotation के लिए वो positive होगा. Rotational motion के लिए work done is going to be positive, and that is what? Torque into delta theta. समझ आया?
बिकॉज फोर्स की जगह हमेशा रोटेशन में टॉर्क आएगा और एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह टॉर्क क्या होता है? ध्यान से दोनों वर्क डन को देखो। अब रोटेशनल का वर्क डन देखो, ट्रांसलेशन का वर्क डन देखो, इक्वल एंड अब टोटल मोशन एक साथ सोचते हैं। इसका मतलब फ्रिक्शन डज वर्क फॉर ट्रांसलेशन, डज हार्डर वर्क फॉर द रोटेशन, बट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कंबाइन देम टुगेदर, देन द पुअर स्टेट इज दैट द फ्रिक्शन डज नॉट डू एनी वर्क। ठीक है, फाइन। तो एक चीज तो हमने एड्रेस कर दी कि फ्रिक्शन डज नॉट डू एनी वर्क फॉर द प्योर रोलिंग। ओके, एब्सोल्युटली जीरो वर्क। Now let us try to understand the second thing, climax. And then if the friction is not doing any work, then how the rolling body comes to rest? Which stops it? Individually, they are fine. Together, they are not fine. Together, if we address them, naturally, we all know that the angular velocity of a rolling body never increases. इसका मतलब जब मैं यहाँ आपसे पूछा कि this friction is increasing the angular velocity, आपने कहा हाँ, मैंने मान भी लिया, पॉजिटिव वर्क भी बोल दिया, बट प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई चीज लुढ़का दो और लुढ़कते समय एज इट गोज ऑन इट्स इंक्रीजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा कभी होता ही नहीं। होता क्या है हम सब जानते हैं, इट नॉट ओनली इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस, इट्स लीनियर वेलोसिटी आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, एक बार ऐसे ही आई वाज टीचिंग, आई थिंक लॉन्ग बैक, ईयर मुझे याद नहीं है, अ चाइल्ड सेज दैट कि सर व्हाई हैव यू टेकन द फ्रिक्शन इन, बिकॉज़ कि दिमाग तो आपको आपका भी चलता है, फ्रिक्शन आप बैकवर्ड लेके समझा रहे हैं, फ्रिक्शन आपने बैकवर्ड क्यों लिया? क्योंकि आप देखोगे कभी एग्जांपल्स में किसी जगह इसी रोलिंग के केस में फ्रिक्शन फॉरवर्ड ले लेते हैं। अब ये बड़ी मुसीबत है कि कब फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा, कब फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा। फिर कहोगे सर क्योंकि स्लिप तो हो नहीं रहा है, फिर टेंडेंसी से पता लगाएंगे फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड ले लूं, आई कैन टेल यू उस केस में भी सेम रिजल्ट आएगा। उसमें ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, सम तो अभी भी जीरो होगा। इसका तो उस कंसेप्ट में कोई कभी लूपहोल नहीं होगा जो कंसेप्ट हमने आपको दिया कि ड्यूरिंग द प्योर रोलिंग फ्रिक्शन डज नॉट डू एनी वर्क, वेदर यू टेक इट बैकवर्ड और फॉरवर्ड। फ्रिक्शन विल बी बैकवर्ड और फॉरवर्ड, दैट विल बी डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन द type of cases. Why? Because you have to consider that the tendency of slipping. Maybe the sphere is rolling and the force is applied in such a way that there is always a tendency at the bottom to slip. And if I say there is a tendency to slip in backward direction, naturally the friction will be in forward direction. Remember in the same room, I told you that for the front wheel, the friction acts in backward direction because of rolling. Whereas for the back wheel, the friction is in forward direction. जबकि दोनों पहिया साइकिल का दोनों रोटेट करता है, रोल करता है, लेकिन चूंकि पीछे वाले पहिए पे हम लोग जोर लगा रहे हैं, therefore the tendency of the back wheel is always to slip, to slide, and therefore I have to take the static friction in the forward direction. ठीक है, so forward या backward पे कोई लड़ाई नहीं है, it depends, but in both the cases the work done by the friction will always be zero. There is no doubt about it. Now see, अब मुझे ये समझाना जरूरी है आपको कि प्योर रोलिंग के दौरान स्फीयर रुकता कैसे है। I have also seen literatures, different literatures, and the conclusion which I have drawn, I am explaining you. Maybe you can always debate on कि ऐसा कैसे हुआ. It is believed that when the sphere rolls on a surface gets little deteriorated. That means the normal reaction which we normally consider every time to pass from the center, it doesn't pass from the center here. Because if there is a deterioration at the surface, then the normal reaction will definitely not pass from the center. It will pass little ahead from the center. What deterioration I'm talking about, it could be a microscopic level. ऐसा नहीं होगा कि स्फीयर रोल करते, अच्छा मान लो दलदली मिट्टी है, वहां तो दिख ही जाएगा आपको। दलदली मिट्टी में कोई चीज लुढ़का के देखो, रोल करके देखो, देखो जब भी ये रोल करना शुरू करेगा, मिट्टी थोड़ी सी डिटोरिएट होगी, थोड़ी सी दबेगी। नेचुरली रोल करने के प्रयास में इसे प्रेस करेगा, तो प्रेस करेगा तो जो सरफेस होगा बजाय फ्लैट के थोड़ा सा तो नीचे झुकेगा। तो जब मैं इस पाम को ऐसे रखता तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होता, अगर मैं ऐसे करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन, सिंस इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर,
it will generate a torque. What will be the torque of normal reaction? N into x. And which direction? In anti-clockwise direction. सबको समझ आ गया ये? Torque is always force into distance. So that's about the center, normal reaction will have a torque during the pure. Had it been passing from the center, where the mg is also passing, then mg and normal reaction, they will balance for the translational motion, as well as mg and normal reaction, they both are not generating any torque about the center. But now mg is not generating any torque about the center, but normal reaction is doing a torque about the center. So what this torque will do? This will reduce omega. Got it? Why? Because the rotation is taking in this direction and the torque is acting in opposite direction. So definitely this torque will reduce the angular velocity. ठीक है? अब ओमेगा अगर कम हुआ, linear velocity भी कम होगी. ठीक है? And if linear velocity reduce, अब आप कहोगे linear velocity कैसे रुकती है? Friction से. ठीक है? Friction will definitely reduce the linear velocity. That means there is a mutual understanding between the torque which I just represented and the friction, that जितने से तुम कम करेगा उतने से मैं भी कम करूंगी. The friction does the same amount of reduction in the linear velocity as the torque does in the. और ये इतनी ब्यूटीफुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हर स्टेप पे ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है. थोड़ा उसने कम किया, थोड़ा इसने कम किया, एंड देयरफॉर द प्योर रोलिंग कंटिन्यूज टू अकर. जब बिल्कुल एकदम स्लो होने लगता है तब भी एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली इज वेरी स्मॉल. लिनियर वेलोसिटी इज आल्सो represented by v equal to r omega, but the understanding continues. Once it stops, suppose sphere आके रुक गया, ठीक है, then normal reaction now quickly shifts to the center, because now I'm sorry, I cannot entertain the normal reaction away from the center. Surface doesn't have any deterioration now because not having a tendency to move forward. So once the normal reaction shifts to the center, then naturally there is no torque. Okay, friction, no question, because the sphere comes to rest. ठीक है, तो ये तो था why a rolling body comes to rest. Fine. Is it okay? Trajectory of a point on the circumference is never a circle. If you see, this is the trajectory. Circumference के points को तुम कई तरीके से चेक कर सकते हो. मैंने जो चेक किया है, आप चाहो तो घर जाके चेक कर सकते हो. एक हुपला ले लेना, हुपला जो ऐसे कमर में डाल के हिलाते हैं, उस हुपले में आप कोई रुमाल बांध देना किसी सर्कमफरेंस पे, और हुपले को आप रोटेट करके छोड़ देना ऐसे सरफेस पे. सिर्फ हुपले को ट्रेस करोगे, अगर मान लो हुपला आपने यहाँ हुपला बांधा है, तो जब ये आगे बढ़ेगा हुपला, तो ये एक्चुअली कुछ इस तरह से पाथ ट्रेस करेगा. It is not a parabola. Okay, the path which it traces is a cycloid. And the area of the cycloid, these are things which I have brought it for you. Sorry, I will not calculate. You can note it down. Area of the cycloid is 3 pi r square. And the arc of the cycloid is 8r. Just for your information. आर्क समझ रहे हो? आर्क ये पूरा, ठीक है, 8r. What is r here? Radius of the sphere or the radius of the disc जो roll कर रहा है. And this area under the cycloid is 3 pi r. 3 pi r square. It will be wonderful question for mathematics वालों के लिए to calculate that area is 3 pi r square as well as the arc using the calculus method. Now see, for the pure rolling, these are the things, but when the moment the rolling becomes impure, then there are certain situations which you need to understand. Look at these situations, this diagram. इसके नीचे वाला diagram देखिए. Suppose there is no translation. Then naturally the body is not moving forward. What is the velocity of center of mass will be? In that situation, the velocity here is r omega, velocity there will be r omega.
both the ends will obviously, that is the case when the wheel get stuck in a mud. Okay, obviously it just keeps performing rotation there, it's not translating. Now there could be situation when there's a pure translation, just like apply a hard brake while you are driving the bike and then suddenly see the bike skids on the road, stopping all the rotation, continuing only translation. In that case all the points will move with the same linear velocity, top wala bhi, beach wala bhi, bottom wala bhi. Okay, say that is VCM. Unrolling तो मैंने already समझा दिया है. But अगर slipping हो, suppose impure rolling हो, तो there could be two kind of slipping. So note कर लो. Impure rolling. Number one, forward slipping. Now, what is forward slipping? When the body while rolling actually slipping in forward direction, is still rolling but slipping in forward direction. Now, it will happen when the center of mass velocity is not equal to r omega. Because had it been VCM equal to r omega, then probably this could have been pure rolling, क्योंकि VCM r omega तभी आएगा जब bottom at rest पे है, और top वाला क्या होगा, twice VCM. But if VCM is more than r omega, that means the translational velocity is more than the required one for the pure rolling. ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, the body has got more hurried into the translation and little lethargic into rotation. तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझाऊं? Hurried into the translation, lethargic into rotation का मतलब ये हुआ कि while rolling इसको आगे बढ़ने की चूंकि जल्दी मची हुई, इसलिए रोल करते करते ऐसे स्लिप कर गया. ठीक है, जैसे बच्चे स्किड करते हैं सड़क उस पे सरफेस पे, तो ये रोल तो कर रहा था, सडनली ये स्किड कर गया, थोड़ी देर के लिए स्किड कर गया. जब ये स्किड किया होगा ऑब्वियसली फॉरवर्ड स्लिपिंग हुई. देयर इज नो डाउट दैट जब भी कभी ये होगा तो फ्रिक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो नोट कर लो, फॉर द फॉरवर्ड स्लिपिंग फ्रिक्शन acts in backward direction. Very interesting. Will this friction now to work? अब वर्क होगा या अभी भी नहीं होगा? ये देखो ओमेगा ये था, अब वर्क होगा. और ये जो फ्रिक्शन होगा, will it decelerate the linear velocity? Will it increase the angular velocity? Yes, it will. Look at this. Friction. आपने कहा ना friction acts in backward direction. ये friction हो गया. इसका angular velocity ये है. So don't you feel that इस friction का जो torque होगा वो इसी sense में होगा? That means हो क्या रहा है? शुरुआत कब हुई? जब VCM was more than R omega. Pure rolling के लिए क्या चाहिए? VCM is equal to. अब friction क्या करेगा? Double roll play करेगा. ठीक है, उस डबल रोल में इसका रोल नंबर 1 जिस वेलोसिटी को हमने कहा ज्यादा है उसको कम करेगा, और जिस वेलोसिटी को मैंने कहा कम है उसको ज्यादा करेगा. और ऐसा करके करना क्या चाहता है वो? प्योर रोलिंग. थोड़ी देर बाद क्या होगा? वी विल रीच अ सिचुएशन व्हेन न्यू लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आर इनटू न्यू एंगुलर वेलोसिटी. एंड वंस यू रीच दैट सिचुएशन, प्योर रोलिंग अगेन बिगिंस. समझ में आया? दोबारा should I explain again? So if there is a slipping, friction पहले डिसाइड करो किधर होगा. अगर स्लिपिंग फॉरवर्ड है, फ्लेक्शन विल बैकवर्ड डायरेक्शन. फ्रिक्शन स्टार्ट्स नाउ वर्किंग. फ्रिक्शन विल रिड्यूस वन वेलोसिटी एंड इंक्रीज अनदर वेलोसिटी टिल VCM becomes equal to R omega. ठीक है, that means friction does work in the direction of restoring the pure rolling again. Fine, let me explain again. If this is moving forward and velocity of center of mass VCM is more than R omega, that means the translational motion is more and the rotational motion is less. ठीक है, घर जाना. आप कितने लोगों ने हुपला देखा है? घर में होगा भी ना. वो गिफ्ट के लिए लोग देते हैं, उसको मिलता है, उसको आप हुपला बना लेना छोड़ छोड़ के. ठीक है, ले आना है खरीद के, 100-200 रुपए का मिलता है. एंड देन उसको आप ऐसे फेंकना. ठीक है, एक बार तो ऐसे लुढ़का दो, प्योर रोलिंग.
ठीक है, प्लीज करना ऐसे, और एक बार आप हाथ में ऐसे पकड़ना, ठीक है, और इसको ऐसे फेंकना। ऐसे फेंकने का मतलब ये हुआ कि यू आर गिविंग फॉरवर्ड थ्रो बट रोटेशन. So when you are giving this rotation and forward throw, actually rotation doesn't support the translation. Which rotation supports the translation? If there is a forward movement, then if I look from this side, then clockwise rotation supports the forward movement. ठीक है, आप अपनी तरफ से देख के बोलो. If it is anti-clockwise rotation, this movement is going to support. That means the rotation anti-clockwise आपके लिए, अगर यहाँ कोई rotation हो रहा है आपके लिए, anti-clockwise rotation and this movement will support each other. लेकिन अगर उल्टा करोगे तो support तो करेगा नहीं. अब support नहीं करेगा तो slipping होगी. ठीक है, जो मैं करने को कह रहा हूं, प्लीज आके करना. आप इसे अगर बहुत ज्यादा यू रोटेट करके आराम से फेंकोगे, मतलब आप अपने हाथ को घुमाने का, इसका हुपला ऐसे पकड़ना कि इसको फेंकते समय आप ज्यादा रोटेट कर दो, ठीक है, ऐसे, और फेंकने की वेलोसिटी कम रखना. तो हुआ क्या, सिंस आपने एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा दे दी, लीनियर कम रखी, वापस आ जाएगा आपको अपने आप, थोड़ी देर जाएगा, रुक के वापस आ जाएगा. करके देखना, पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा बैलेंस बना के रखना, ऐसे नहीं कि गिरा दिया उसे, ठीक है, थोड़ा वर्टिकल रखना इसे, तो इट विल गो, स्टॉप एंड कम्स बैक. And you can easily do it. But इसको इस तरह से करना, आप थ्रो करने की वेलोसिटी ज्यादा रखना और रोटेशन थोड़ा आराम से करना. It will never come back. It will slip, but it will never come back. क्योंकि थ्रो करने की वेलोसिटी आपने ज्यादा रखी है, that means लीनियर वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी उतनी है नहीं. लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो भी है वो रिवर्स डायरेक्शन में है. तो आपको समझाता हूं फ्रिक्शन का काम क्या है. डबल रोल बने वाला फ्रिक्शन का, और डबल रोल बहुत बखूबी करता है, किसी भी हॉलीवुड बॉलीवुड के हीरो से अच्छा रोल करता है फ्रिक्शन यहां पर. ठीक है, इसका डबल रोल क्या है, ये एक जो चीज ज्यादा होती है दैट ही वांट्स टू किल, और जो कम होती है दैट फ्रिक्शन वांट्स टू इंक्रीज टिल what normal v becomes equal to r omega, because the fight is actually to reach the situation when v equal to r omega, so that pure rolling begins. ठीक है, so when it comes back to you, it definitely stops there, तभी तो वापस आएगा. But when it stops there, it is still rotating. Now it's very interesting to understand कि I threw it in this direction whereas rotated in this direction. That means the rotation was not supporting the translation. So maybe at the time when the hoopla stops, the translational motion is zero, but rotational continues. But now the rotational motion will be in, and this time the rotational motion is going to support the translational motion. Maybe after a certain distance, the pure rolling begins. Fine? Is it okay? In this situation, what is happening? VCM is more than R omega. That means there is a translational motion which is more. So friction will kill it. Okay? Omega, as I told you, will be increased by the friction. So let's now work. When pure rolling begins, बताओ क्या होगा? I can say V dash will be equal to R into omega nu. अब V nu क्या होगा? VCM minus FR upon M into T. Yes या no? नई linear velocity, first equation of motion, initial minus A force upon mass into T. ठीक है, T टाइम बाद प्योर रोलिंग शुरू हुआ. ओमेगा नया क्या होगा? ओमेगा नया क्या होगा बोलो? ओमेगा ओरिजिनल ओमेगा दिया होगा, मान लो ओमेगा नॉट है, प्लस FR अपॉन FR या अल्फा लिख दूं, अल्फा T. Fine. Why am I adding it? Because omega will increase. Now what is alpha here? Angular acceleration. How to find alpha? Alpha is torque upon I. What is torque?
ठीक है? So please substitute alpha from there. You can find the time. बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो. You can find the new velocity when the pure rolling begins. You can find the new angular velocity when the pure rolling begins. You can find the time taken when the pure rolling begins. ठीक है? Is it okay? एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है बच्चों. See this situation. When VCM is less than R omega, where is the body hurried into? Translational motion or rotational motion? So if it is rotational motion hurried into, that means the motion, rotational motion is more. Friction will now come as a rescue force. It will reduce the more amount of the angular velocity and increase the less amount of the linear velocity till pure rolling begins. किधर लगेगा फ्रिक्शन बताओ? Since rotation is hurried into, that means इसको जल्दी भागने की टेंडेंसी है रोटेट करने की. इसका मतलब स्लिपिंग किधर होगा? बैकवर्ड. फ्रिक्शन किधर होगा? सॉल्व कर लोगे? छोड़ दूं? ठीक है? इसको ऐसे रोटेट, ऐसे स्लिप करने की टेंडेंसी होगी इस समय. Therefore friction will be in forward direction. Fine. Is that okay? One more thing I will do. That is the rolling on inclined plane, and then I will stop, and then probably I will leave you for 24 questions, 24 plus 5 mine, 30 questions to solve, and I will see that हम आपके साथ कितना कर सकते हैं. Rest जितना नहीं हो पाएगा, naturally you have to solve yourself. But there are 30 questions I have brought for you. Okay, 24 questions are MCQ, so probably I expect that you must solve it in 30 minutes roughly. So last 30 minutes for MCQ. And 5 questions are subjective, so let me take as much time as I want to solve that. Next is the rolling on inclined plane. Rolling on inclined plane, pure rolling. Let's decide quickly couple of things. In which direction the friction act here? Up the incline or down the incline? Somebody says up, somebody says down. I can't do both. Up या down. There should be logic behind it. चलो चलो एक कोई मान लेते हैं, मैं भी बता देता हूँ कौन गलत है कौन सही. Up मान लेता हूँ, ठीक है, या down मान लेता हूँ. चलो down. देखता हूँ गलत है सही है. Will this friction, naturally we all know that जब भी कभी कोई चीज रोल करके आती है ऐसे रोल करेगी. Will this friction reduce the angular velocity or increase the angular velocity? Will this friction reduce the angular velocity or increase the angular velocity? कैसे सोचते हो? टॉर्क सोचो, टॉर्क. अगर ये इस फ्रिक्शन का टॉर्क सोचो पहले, इस फ्रिक्शन का टॉर्क इस सेंटर के अबाउट कैसे लगेगा? फील किया करो ना, फील करना शुरू करो. फिजिक्स फीलिंग होती है फिजिक्स में. अगर ये रोटेट, ये फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट है जो फिक्स है, तो अगर ये फोर्स इसको इस फिक्स पॉइंट के अबाउट घुमाएगा, ऐसे तो घुमाएगा. ये देखो फील कर गया ना, पूरा घूम गया मैं. तो ऑब्वियसली अगर ऐसे घुमाएगा, टॉर्क इसी सेंस में होगा, रोटेशन इस सेंस में है, टॉर्क इस सेंस में है. इतना कंफ्यूजन कहां से आ रहा? ठीक है. So that means this friction will now apply a torque which will reduce omega. I'm sorry, it never happens in any part of the world. Inclined plane पे कभी भी ऐसा नहीं होता. हो तो शायद हम पागल ही हो जाए सोच के कि यार इसको लुढ़काया था, नीचे जाते जाते इसकी एंगुलर वेलोसिटी अपने आप कम हो गई. जादू. ठीक है, तो गलत है, ये गलत है. इसका मतलब रिवर्स करते हैं. ठीक है, तो फ्रिक्शन ऊपर होगा. बच्चे ने कहा सर अगर हम ऊपर की तरफ लुढ़का दे, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हमेशा नीचे आएगा, नीचे से टक ऐसे ठोक दो तो ऊपर जाएगा, तब देखते फ्रिक्शन किधर होगा. अब आप बताओगे इस बार, ठीक है, फ्रिक्शन किधर होगा? डाउन द इंक्लाइन या अप द इंक्लाइन? अभी भी अप द इंक्लाइन. शाबाश. कैसे बेटा? एग्जैक्टली. दैट मींस वेदर द बॉडी रोल्स डाउन द इंक्लाइन और अप द इंक्लाइन, फ्रिक्शन ऑलवेज अप द इंक्लाइन. ठीक है, MCQ 1 mark question. Correct. Fine. So now this friction is going to act
about this point a torque will be applicable. Mg sin theta, all we know, mg sin theta here. Normal reaction, please excuse me for showing it from the सेंटर ऑफ मास, बिकॉज वो तो सिर्फ एक डिस्कशन का पॉइंट है. एक ही जगह फिजिक्स में ऐसा कभी होगा कि कहेगा कोई आपसे कि नॉर्मल रिएक्शन डजंट पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है. अदरवाइज इनवेरिएबली जहां भी हम एफईडी दिखाते हैं वी ऑलवेज शो द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. सो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास mg cos थीटा. गॉट इट? कम ऑन. ट्रांसलेशनल डायनामिक्स का इक्वेशन बताओ क्या होगा? mg sin थीटा minus Fr is equal to ma. Yes or no? Rotational dynamics. Torque. कौन सा फोर्स टॉर्क लगा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन? नो. mg? नो. mg cos theta? नो. mg sin theta? नो. Only friction. And therefore friction into r torque is equal to I alpha. Got it? What is alpha? A by r. Pure rolling है. So I can say I A by R, and therefore friction क्या हो गया? I A upon R square. Equation 2. Now if I know these two equations, Fr equal to I A by R square and mg sin theta minus Fr equal to ma, I can easily substitute Fr from here to here and I can get the acceleration, which comes out to be g sin theta upon 1 plus I upon mr square. कर लेना. रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले. रिजल्ट ये दिखाता है कि कहीं पे कहीं फ्रिक्शन कहीं है ही नहीं है. इस पूरे रिजल्ट में कहीं फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट वैलिड तब है जब फ्रिक्शन हो. ठीक है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्फीयर कैसे आएगा? स्लाइड करके आएगा, रोल करके नहीं आएगा. अगर कोई स्फीयर रोल करके नहीं आ रहा है तो आई क्या होगा? आई क्या होगा? अगर कोई चीज स्फीयर, कोई स्फीयर है लुढ़का दिया, रोल करके नहीं आ रहा है, स्लाइड करके आ रहा है, तो व्हाट इज आई? जीरो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ओनली देयर व्हेन देयर इज अ रोटेशन. इसका मतलब फ्रिक्शन है, हिडन है, आई के फॉर्म में है. अगर फ्रिक्शन नहीं है, इनवेरिएबली फ्रिक्शन अगर जीरो है, स्मूथ सरफेस होता तो आई क्या हो जाता? जीरो. और अगर आई जीरो रख दूं मैं यहां पर, तो व्हाट इज द ए? दैट मींस चाहे स्फीयर लो, चाहे रिंग लो, चाहे डिस्क लो, चाहे सिलेंडर लो, चाहे हॉलो, सॉलिड, कुछ भी लो, ठीक है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, ऑल ऑफ देम विल कम विद द सेम एक्सेलरेशन as long as mass is as long sorry independent of the mass, as long as theta remains same, g sin theta. So अगर क्वेश्चन आया कभी कि स्फीयर, डिस्क, spherical cell of different masses, different radius, they have been rolled down together on a smooth surface, which of them will reach bottom first? आंसर होना चाहिए all of them will reach simultaneously. क्वेश्चन आया rough surface, not a smooth surface, which of them will reach the bottom first? जिसका I सबसे कम होगा, क्योंकि जिसका I सबसे कम होगा उसका ये सबसे कम होगा, जिसका ये सबसे कम होगा उसका ए सबसे ज्यादा होगा. तो अब देख लेना I किसका सबसे कम है. ठीक है, नॉर्मली सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होता है 2/5.4 बाकियों के कंपैरेटिवली, बट यू नेवर नो, क्या पता कोई ऐसी स्ट्रक्चर हो जिसका, तो I चेक कर लेना जिसका सबसे कम होगा. गॉट इट? आगे बढ़े. नाउ चिल्ड्रन, कभी कभी फ्रिक्शन होता है फिर भी प्योर रोलिंग नहीं होती इस पे. याद है वो एंगल ऑफ रिपोज का केस? इंक्लाइन प्लेन का हर एंगल सफिशिएंट नहीं होता किसी चीज को नीचे ले आने के लिए. तभी आपने वो पढ़ा था एंगल. दैट मींस देयर इज अ पर्टिकुलर एंगल एट व्हिच एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, एंड दैट एंगल इज नॉट एन एंगल ऑफ रिपोज. सिमिलरली, if I give you a value of mu, okay, which is fixed, that mu will definitely require a value of theta for having a pure rolling done. आप कहोगे सर मैंने दोनों को फिक्स कैसे किया? ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. ये Fr है, ये I अपॉन R स्क्वायर है, ठीक है, A थीटा का फंक्शन है. इसका मतलब राइट हैंड साइड में एक थीटा का फंक्शन है,
LHS में म्यू का फंक्शन। दोनों इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू देयर इज ऑलवेज अ यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा विच रिक्वायर्स फॉर अ बॉडी टू रोल डाउन सक्सेसफुली। ऑब्वियसली आई विल डिसाइड, आई के ऊपर आई तो अलग अलग होगा ही, बट ऐसा हो सकता है ना हो, क्वेश्चन में ऐसा हो कि द बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस वेयर द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द प्योर रोलिंग। इसलिए आपको ये जानकारी जरूरी है यहां कर लेना कि वो कौन सी वैल्यू म्यू और थीटा का कौन सा क्रूशियल रिलेशन होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग टू बी डन। वो नोट कर लो, वो यहां है। कहो तो प्रूव कर दूं या लिखवा के आगे बढ़ जाऊं? शुड आई प्रूव इट? तो आसान है। यू नो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, आप भी कर लेना, आप यहां नोट कर लो। दिस इज द रिलेशन व्हिच टेल्स अस दैट हाउ द थीटा एंड म्यू दे मस्ट बी रिलेटेड टुगेदर इन ऑर्डर टू अलाउ अ बॉडी टू हैव प्योर रोलिंग। कर लेना अगर जाके, ठीक है। एक केस ले लो, सपोज सॉलिड स्फीयर के लिए मैं अगर थीटा पूछूं, म्यू दिया है, म्यू के टर्म में बताओ थीटा क्या होगा सॉलिड स्फीयर का? What is r square upon k square for solid sphere? For a solid sphere, what is the moment of inertia? 2/5 equal to what is k square upon r square? 2/5. And therefore, what is r square upon k square? 5/2. And therefore, what is tan theta? Mu into 5/2 plus 1. And therefore, mu is equal to 4 ऑप्शन में से वही ऑप्शन करेक्ट करके आना जो यहाँ आया, ठीक है। But I think for doing that, you need to know the formula, which I told you. कि the sphere will perform pure rolling if mu is 2/7 tan theta। ना तो मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। फाइन। हॉलो स्फीयर के लिए कुछ और आएगा नेचुरली, क्योंकि उसकी k स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू कुछ और गई अलग अलग। इसलिए मोइल की जानकारी बहुत जरूरी है अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। Let's see now online questions. I was just hungry to see that कोई पूछे तो सही कुछ। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. 4 objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of 2 perpendicular diameters of rings. The angular velocity of the ring will, I think my kids will do it if I'm not mistaken. By doing that, what they are changing? If they keep 4 objects across the diameter, what have they changed? Moment of inertia. So which law will apply? Law of conservation of angular momentum. If you have changed I, you be ready for the change of omega, such that I old into omega old is equal to I new into omega new. बल्ले बल्ले, ठीक है, क्योंकि gently placing 4 masses will not change any angular momentum. ठीक है, और है बस एक, चलो। Now, what is the total kinetic energy during the pure rolling, children? Half I omega square plus half mv square. Fine. ये जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये हाफ mv स्क्वायर से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉलिंग गेम नहीं होती जो लुढ़काते गिराते हैं, उसमें अगर हम लोग रोल करके कोई चीज फेंकते हैं तो नेचुरली उस रोल करके फेंकने में हमेशा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी टुगेदर, ट्रांसलेशन एंड so the work it does is always going to be more, and that is why rolling object stops for a farther distance after farther distance as compared to sliding object, ठीक है। इसलिए सडन ब्रेक लगा के जब हम स्किड करते हैं व्हीकल जल्दी रुक जाती है, अगर हम इंजन ऑफ कर दें तो आराम से गाना गाते आते थोड़ी दूर तक जा सकते हैं।
because actually it is performing rolling, so definitely it will have a kinetic inertia as well as rotational kinetic inertia as well as translational kinetic inertia. Fine. Yes sir, now questions. पहले 5 क्वेश्चन हमारे देख लो आप. इस बार मैं ला तो रहा था लेकिन मांग लिया मेरे से, तो वो 5 डिवाइड हो गया. 5 जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने दे रखा है, दैट्स दे आर very important, so please do it as a part of their new initiative, which I welcome, the CBSE. So 5 questions will be given to you, and you all are supposed to be doing it, attempting it with a full honesty. And next time or next to next time, whenever the solution is available to you, then please recheck your answer and the solution and check it out that where the mistakes has been committed by you. This will be one way, because the solution also have been written by me, so you'll always find that steps. Okay, and maybe a couple of steps are absolutely the way I have done, but some steps you might have done wrong, so that step must be useful for you to rectify your mistakes in future. But rest 5 questions you can check, sir. No, IT special, ITJ special 1, ITJ special 1. Ha, bas. Start doing from question number 1. ये हम लोग मिल के करेंगे, ठीक है. 1-2 मिनट आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा. आप ट्राई करो पहले. द सरफेस डेंसिटी ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस a, सर थोड़ा और छोटा और अच्छा इतना ही है. डिपेंड्स ऑन द रेडियस डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर एज rho r is equal to a plus br. Find the MOE of the disk about its natural axis passing through center of mass of the disk. You have to find the moment of inertia about this axis, and the density is at a distance r. Density is given as rho r as a plus br. That means as you move, the density is increasing. The disk is heavier towards the periphery and lighter towards the center. Maybe end में metal का बना है और बीच में भूसे का बना है या किसी और material का बना है, हल्का है. ठीक है. So how to find the moment of inertia now in this situation? कल की क्लास में जो लोग थे, कैसे बताया था मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालना? आई कंसीडर्ड स्मॉल, आज भी ले लो स्मॉल रिंग, और इस रिंग का मास निकालो. बताओ, मान लो इस रिंग का थिकनेस dr है और रेडियस r है. व्हाट इज द मास? dm. बोलो. मास विल बी डेंसिटी into area. ये एरियल डेंसिटी है और क्या है? एरियल डेंसिटी है ये, ठीक है. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप? 2 pi r dr. ठीक है. एरिया इनटू दिस डेंसिटी, ये एरियल डेंसिटी. सिंबल पे मत जाओ, ठीक है. वैसे तो सिंबल यही होता है मेरे हिसाब से, बट कभी कभी एग्जाम में सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये लीनियर, ये एरियल, ये volumetric, but anyway we can take rho here. What is then result? 2 pi, बोलो, a plus br r dr. Got it? So this is dm. What is the moment of inertia of a ring? mr square. So dm into r square is the moment of inertia of this small ring, di, and therefore what is the total moment of inertia? Integral dm r square. Substitute the value 2 pi a plus br r cube dr. I must be given the limit. What is the radius of the disk? So 0 to, please solve it. यहाँ छोड़ दो आप, यहाँ मत करो, मतलब यहाँ तक करके छोड़ दो प्लीज. डोंट गो अहेड, आगे कर लेना जब टाइम मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Two particles of mass m1 and m2 are joined by a rigid rod of length r. The system rotates with an angular speed omega about an axis passing from center of mass and perpendicular to the length of the rod. So that the angular momentum of the system is L equal to mu r omega square, where mu is m1 m2 over m1 plus m2, called reduced mass, which you have done. Okay, we can find it. मॉम से आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास नया निकाल सकते हो जल्दी से, और अगर आपको सेंटर ऑफ मास पता चल गया तो फिर एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा उसके अबाउट. ट्राई करो. Should I rub this? Rigid rod, particle m1, m2. जल्दी से मुझे आप पहले ये बता दो कि इसका COM कहाँ होगा. R/2 पे नहीं होगा ना, क्योंकि मासेस अलग अलग हैं. तो मान लो हाँ जिसका ज्यादा होगा उसकी तरफ होगा, बट मुझे क्या पता कौन सा ज्यादा कौन सा कम, दिया ही नहीं है. हाँ तो मान लेता हूँ ये x ना, तो मॉम लगाओ. मॉम m1 x m2 and therefore x is, that's it. ठीक है. मॉम से हमें सेंटर ऑफ मास का इंफॉर्मेशन मिल गया. नाउ यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम. What is the angular momentum? बोलो. I omega. So I about the center of mass into omega. What is I about the center of mass? M1 का क्या होगा I? बोलो. M1 का I m1 into x square. Got it? और M2 का I क्या होगा? ये हो गया ICM. ठीक है बच्चों, वैल्यूज डालो. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x and r minus x. बता r minus x क्या होगा? ये होगा. ठीक है. m2 की जगह m1 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. ऑल द वैल्यूज. बोलो बोलो. इन डाउट. इसको नहीं क्या करेंगे बताओ. इसका हमें तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालनी थी, वो हमने x निकाल लिया. अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हो जाएगी m1 into x स्क्वायर. मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. x की वैल्यू डाल दो, वो आ गया होगा. ठीक है.
दैट मीन्स वी गॉट द रिजल्ट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 आप बाहर ले लो, सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, hurry up quickly. I want that you all of you must complete in 7 minutes from now these 5 questions, so that those 24 questions must be attempted by you in half an hour. MCQ, so I will give you 1 minute per question, not more than that, and they're all yours. मैं कुछ नहीं बताऊंगा, only last 6 minutes I will tell you the answers which I have brought. चलिए, fourth question, third question. In the adjoining figure, find the torque of the normal force acting on the block about the center of the block of edge A, moving down with uniform speed on the rough inclined plane. Absolutely no rotation anywhere. Still torque is to be calculated. पूछा है मैंने torque, rotation नहीं हो रहा है लेकिन. About the center of mass पूछ दिया. Fixed point of center of mass है ये. So you have to find the torque of the normal force acting on the block about the center of the block. इस क्वेश्चन को पढ़ते ही जिनको नहीं पता है कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास नहीं भी कर सकता है, वो सबसे पहले क्वेश्चन को सवालिया निशान से देखते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन चूंकि आपको मैं बता चुका हूं इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल रिएक्शन पास नहीं भी कर सकता है, इनफैक्ट इंक्लाइन प्लेन पे तो कभी नहीं करता, ठीक है। वहां मैंने जबरदस्ती सरफेस को इंक्लाइन कर दिया था, ये तो गॉड गिफ्टेड इंक्लाइन प्लेन है, इसमें तो सेंटर से पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बात और है कि बोर्ड लेवल पे टीचर्स यही बताते हैं आपको, या हम भी यही बताते हैं बच्चों को कि नॉर्मल रिएक्शन इवन ऑन इंक्लाइन प्लेन पासेस फ्रॉम द सेंटर। अभी देखना कितना गलत होगा नॉर्मल रिएक्शन को सेंटर से पास करा के, ऑलमोस्ट स्टक हो जाएंगे हम लोग। कैसे? सपोज करो सेंटर से पास में करा देता, सोच के देखो जरा बच्चों, अगर ये सेंटर से पास करता नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई टॉर्क तो सेंटर से होता नहीं, फ्रिक्शन नीचे आ रहा, फ्रिक्शन इधर होगा, सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क इस तरफ हुआ, समझ आया? फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर के अबाउट इस तरफ हुआ। और हम सबको पता है कि दिस ब्लॉक डज नॉट टॉपल, नॉर्मली द ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन इफ इट इज स्लाइडिंग, इट इज स्लाइडिंग। सो ये जो टॉर्क मैंने अभी फ्रिक्शन के दिखाया, इट हैज टू बी बैलेंस्ड, अदरवाइज तो ये टॉपल कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। रोटेट तो किया नहीं, कोई भी ब्लॉक अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे रख दो, अगर नॉर्मली स्लाइड करके नीचे पहुंचता है तो थ्रू आउट द जर्नी द टॉर्क वाज जीरो। अब क्या करूं? इस टॉर्क को बैलेंस कहां से करूं? फ्रिक्शन को। सोचते हैं mg, सॉरी mg के लिए तो कोई किसी की दाल नहीं गल सकती, क्योंकि mg इज ऑलवेज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। mg का टॉर्क हो नहीं सकता। नॉर्मल रिएक्शन को हमने पहले ही बच्चों को समझा रखा है कि पासेस फ्रॉम द सेंटर, और कोई फोर्स है नहीं। दैट मीन्स अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को सेंटर से पास करने की कसम खा लूं, तो इसका मतलब कोई भी ब्लॉक किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे रखते ही टॉपल कर जाएगा। जैसे रखा नहीं कि टॉपल, टॉपल मतलब लुढ़क गया, और ये तो होता नहीं। तो एक ही सॉल्यूशन, इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है, नेवर कंसीडर द नॉर्मल रिएक्शन पासिंग फ्रॉम द सेंटर। अब एक टॉर्क आएगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास नहीं करता तो इसका टॉर्क इस तरफ होता, किस तरफ होता? ये x मान लो, इसका टॉर्क इस तरफ होता, तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क विल बैलेंस द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। सो व्हाट इज द नेट टॉर्क? जीरो, बॉडी विल गो डाउन। अच्छा, ऐसा करने पे ट्रांसलेशनल मोशन पे की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें प्रॉब्लम तो टॉर्क से था, ट्रांसलेशनल मोशन अभी भी जैसे पहले n वाज बैलेंस्ड बाय mg, अभी भी n विल बी बैलेंस्ड बाय mg बिकॉज़ n इज स्टिल वर्टिकल, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर? टेल मी, इट्स वेरी इजी टू फाइंड। ये जो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है वो n इंटू एक्स होगा। सॉरी, मैं n इंटू एक्स निकाल नहीं सकता क्योंकि मुझे x नहीं पता, बट ये बराबर किसके होगा? n किसके बराबर होगा बताओ? फ्रिक्शन इंटू a/2, समझ आया सबको? सो फ्रिक्शन इंटू a/2 के बराबर होगा, मतलब ये निकालना बराबर हो गया। तो मुझे किसी ने ये पूछा, मैं उसको बोलूंगा दिस इज इक्वल टू fr इंटू दिस। fr हम सबको पता है क्या होता है, बोलो? fr is mg ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, सो आई थिंक इट इज mg sin थीटा into a/2 is the answer,
because the block is sliding down uniformly, therefore net force in the along the direction of inclination will also be 0. So Fr will be equal to mg sin theta. Next question. Next question. This will give you another concept. Read the question, I will tell you. There's a door of an almirah which is 6 feet high and 1.5 feet wide. Its weight is 8 kg. The door is supported by 2 hinges situated at a distance of 1 foot from the ends. Okay? Keep drawing the diagram. Please make the diagram. Door 6 feet, 1.5 feet, hinges, hinge 1, hinge 2, 1 foot, 1 foot. Given है ये? The door is supported by the 2 hinges. If the magnitude of the forces exerted by the hinges on the door are equal, find its magnitude. In fact, we have to find the force exerted by the hinges on the door. डोर इक्विलिब्रियम में होता है या नहीं, जो हम लोग डोर अपने घरों में लगाते हैं, होता है ऑब्वियसली, तभी तो टंगा हुआ है उधर, नहीं तो गिर नहीं जाता. किस तरह के इक्विलिब्रियम में? ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल. अब हम उसे खोलने की जब कोशिश करते हैं, नेचुरली वो रोटेट करता है क्योंकि ऑब्वियसली टॉर्क लगाते हैं हम लोग. लेकिन एज इट इज अगर पड़ा रहे तो उस पे टॉर्क भी 0 होना चाहिए और नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, तभी तो पड़ा रहेगा. अब दिस इज वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन दैट दोनों हिंजेस का जो लोड है, कंट्रीब्यूशन है, वो अलग अलग होता है. नेचुरली हमेशा टॉप हिंजेस और बॉटम हिंजेस के, अच्छा टॉप हिंजेस बॉटम हिंजेस पे दबाव भी अलग अलग होता है. बॉटम हिंजेस पे प्रेस होता है डोर और टॉप हिंजेस पे वो पुल होता है. समझ आ रहा है? दोबारा बताऊं, जब भी डोर कभी उखड़ेगा, ध्यान से देखना कैसे उखड़ता है. बॉटम हिंजेस पे दीवार की तरफ पुश मिलता है डोर, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे दरवाजा उखड़ता है जब भी उखड़ता है. ठीक है, अपनी वेट की वजह से दरवाजा अगर उखड़ेगा तो ऊपर वाला हिंज बाहर निकलेगा. नेचुरली ऐसा कभी नहीं होगा कोई दरवाजा लगाओ जिसमें नीचे वाला हिंज बाहर निकले, डोर ऐसे उखड़ के ऐसे आ गया. ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा नेचुरली, क्योंकि जो वेट का टॉर्क लग रहा है वो अगर डोर ऐसे लगा हो, वेट का टॉर्क इस तरह लग रहा होगा क्योंकि वेट उसके सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा. तो चूंकि बॉटम हिंज और टॉप हिंजेस के ऊपर एक तरफ हम प्रेस डाल रहे हैं, एक तरफ हम पुल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो एक्शन रिएक्शन है वो भी इक्वल नहीं होता. लेकिन आपको वहां उलझाने के बजाय क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा आपको नसीहत दी है कि प्लीज कंसीडर द हिंजेस रिएक्शन इक्वल. किसी टिपिकल केस में अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया कि आर दे इक्वल, प्लीज टेल नो दे आर नॉट इक्वल. वहां मत इक्वल कर देना जस्ट बिकॉज इस क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये मेरा कोई एक स्टेटमेंट नहीं है जो आपको एज ए यूनिवर्सल ट्रुथ मार कर चलना है, नहीं, इसमें दिया हुआ है सिर्फ. अदरवाइज दोनों हिंजेस के जो भी रिएक्शन होते हैं अलग अलग होते हैं, मैग्नीट्यूड में भी अलग अलग होते हैं, डायरेक्शन में भी अलग अलग होते हैं. ठीक है, अब यहाँ चूंकि इन्होंने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम दिया है तो मैं डायरेक्शन भी अलग ले लेता हूं. अब किधर लूं? ऐसे ले लेता हूं रैंडम. ठीक है, हिंजेस का सर ने बताया भी था शायद किसी क्लास में आपको, आई थिंक, कि हिंजेस के जो रिएक्शन होते हैं वो रैंडमली लगते हैं, लेकिन हाँ सारे एक्शन रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ऐसे होते हैं कि दे ऑलवेज पास फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. फाइन, so I can represent them in such a way. Practically, they must pass from the single point. I don't want to show them, but my interest is actually equilibrium. And if mg is acting in this direction, it is the weight. I need to balance the torque of mg by the torque of the hinges, 2 hinges. Then only the net torque on the door will be 0. अब hinges का torque किसी particular fixed point के about निकालना होगा.
ठीक है, हमें तो हिंज का फोर्स निकालना है, लेकिन टॉर्क की हेल्प से वी कैन फाइंड द फोर्स। पहले आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करो। सपोज थीटा एंगल पे ये हिंज का फोर्स लग रहा है, ये भी थीटा एंगल है, इसके दो कंपोनेंट कर लो, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, व्हाट इज द ट्रांसफर translational equilibrium? Tell me. I can write 2f sin theta is equal to mg. Weight of the door is given, but there are two variables, f and theta. ठीक है, let's try to find out the torque. किसी भी हिंज के बाद टॉर्क निकाल लेता हूं। अगर मैं इस हिंज के बाद टॉर्क निकालता हूं, इस हिंज के बाद वेट का टॉर्क किधर होगा, सेंस बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इस हिंज के अबाउट H2 के अबाउट वेट का टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इस हिंज के अबाउट इस हिंज पे लगने वाले फोर्स का टॉर्क 0। इसी हिंज के अबाउट इस हिंज पे जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क 0। इस हिंज के अबाउट आउट ऑफ द टू कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट का टॉर्क 0 होगा? इस कंपोनेंट का 0 नहीं होगा। दैट मींस if I find the torque of f cos theta about this point, tell me sense, will it be clockwise or anti-clockwise? About this point, the torque of this force f cos theta. I got my job done. क्योंकि मामला बड़ा रैंडम था, इसलिए अपनी मर्जी के मालिक हैं आप। जब भी कभी सिचुएशन, आप भी कुछ और भी अप्रोच इसके हो सकते हैं सॉल्व करने के, ये यूनिक अप्रोच नहीं है। तो मुझे मिल गया वो जो मैं चाहता था। क्या मुझे एक टॉर्क मिल गया जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, एक टॉर्क जो क्लॉकवाइज है। इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क, बाकी का टॉर्क तो है ही नहीं, मैंने बता दिया ना, तो इसका टॉर्क ना इसका, इसका मतलब फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम एफ कॉस थीटा का टॉर्क किसके अबाउट? इस हिंज के अबाउट। बताओ कितना लूं? एफ कॉस थीटा टू दिस डिस्टेंस 6 फीट। 6 फीट लंबा डोर है, एक फीट निकल गया, कितना बचा? इसका मतलब एफ कॉस थीटा इंटू 4 फीट। फीट को फीट में रहने दो, राइट हैंड साइड में भी आएगा फीट, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू वेट का टॉर्क इस हिंज के अबाउट, ये डिस्टेंस कितना लूं? 1.5 फीट ये है, ये कितना होगा? 0.75 फीट। 0.75 मतलब 3/4। हाउ मेनी वेरिएबल इन दीज टू इक्वेशंस? 2, थीटा एंड एफ। कर लेना, सॉल्व कर लेना। इन फैक्ट स्क्वायरिंग एंड एडिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एफ आ जाएगा। ठीक है, एफ ही निकालना था, और कभी थीटा निकालना हो तो डिवाइड कर देना। Will you do it? छोड़ दूं? Next question. A uniform rod of length L lies on a smooth horizontal table. A particle moving on the table strikes the rod perpendicularly at one end and stops. Find the distance traveled by the center of rod before it turns round a right angle. I think ये तो कर लोगे, तो आज ही बताया मैंने। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास पूछा, लेकिन वो कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्मली चलेगा। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो निकालोगे ना बाय अप्लाइंग व्हिच लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब टाइम कैसे निकालोगे? एंगल से। और बताया था मैंने एंगल और टाइम रिलेट करना। ओमेगा निकाल लेना, फिर ओमेगा को डी थीटा बाई dt कर देना। थीटा दे रखा 0 से π/2, t निकालना, वहां से t निकालकर यहां रख देना। VCM इंटू t इक्वल टू डिस्टेंस। जल्दी जल्दी तो नहीं हो गया? ओके, क्योंकि रिपीट हो रही चीजें इसलिए जल्दी कर रहा हूं। फाइन, कर लेना। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हो तो गया, एक और बचता है। चलो देखिए क्या ये, लेट मी सी। अच्छा, उसी का एक केस है जो मैं आज डिस्कस कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। सपोज द मास ऑफ द रॉड ऑफ द पार्टिकल इन द प्रॉब्लम 5 is m and
m and the particle sticks the rod after the collision. ठीक है, ट्राई कर लेना. These questions are there for you to try. सर एक ना MCQ होगा ITJE का. अब जरा इन्हें just give them the exposure of that and let them start. कहीं पर एक अलग से पेज स्टार्ट कर लो. There are 24 questions and you will absolutely get 24 minutes for that. 1 minute per question. I expect the result around 50%. That means 12 questions all of you must do. नहीं सर, ये तो थर्मोडायनेमिक्स है, ये भी पढ़ाऊंगा इन्हें बाद में कभी. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों. एक ना नीचे आइए, ITJE 1 2 3 करके ना ITJE 1 खोल लो. हाँ 1. सीधा कर दो, बड़ा करो. स्टार्ट. द टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ. और बड़ा सर, अब इससे बड़ा नहीं हो सकता. करना करो मत करो, चलो ट्राई करो. डोंट डू मोर देन 1 minute फॉर वन क्वेश्चन. मूव अहेड. अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो. ये तो ऑनलाइन भी पूछा था उन्होंने 4 पूछा था, हमने तो 2 ही दिया है. Online students, you can keep doing it. Don't flash the answer. At the end of the day, when I will show the answer, you can match your answers with the answers which you have done. Second, थर्ड का सी, फर्स्ट का नहीं बताया सबका. कितने लोगों का फर्स्ट का सी आ रहा है? अच्छा, कई 2 3 और लोग किए नहीं. चलो आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं. नीचे बोलते जाओ. You say him, he will do it, but take care of the other children also. थर्ड तक तो पहुंचे होंगे सारे. हाँ, और ऊपर कर लो. यस यस, बस ये रहो. ऐसा तो सेकंड हो गया ना. थर्ड से दिखाओ. हाँ, थर्ड के नीचे.
इक्वल है, क्लियर नहीं है, और बड़ा नहीं हो सकता सर, और अब ठीक है। सेकंड का क्या आया, सेकंड का 0, आई मीन थर्ड, जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, एटलीस्ट 24 मिनट में खत्म तो करो इसे, बाद में तो मैं दे ही रहा हूँ आपको आंसर। हो गए 5-6 मिनट हो गए, अब तक क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच जाना चाहिए था आप। सर ऊपर ले जाइए, हाँ रोकिए। किसी का हुआ थर्ड, कितना है, ये और किसी का, तो 2 बच्चों का ले लेता हूँ, कोई नहीं, आगे तो जिनका नहीं हो रहा है आगे बढ़ जाओ, इसका मतलब आपको उससे पे हिंट चाहिए। फोर्थ का बताओ, है फोर्थ का डी, सबका, कई लोगों का, हाउ मेनी सी, फिफ्थ, दीज आर वेरी रैंडम आंसर्स, आप अपना मत चेंज करने लगना प्लीज हमारे लिखने से, ठीक है, बट somehow I'm writing the answer because there are other people also watching us, and then at the end of the day I will tell you the answer। तो जब मैं रियल आंसर बताऊंगा तो उस समय अपना आंसर चेक करना, जो जो आपका सही है वो टिक कर देना, जो गलत है उसे क्रॉस कर देना, ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली यू आर सपोज टू बी आस्किंग कि जो गलत आपका है कैसे हुआ, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ बताओ, आज ही डिस्कस किया यार, 3-4 लोग का है ना अभी, चलो चलेगा फिर। 6, द नेक्स्ट पेज, क्या बात, गुड। आपके लिए एक हिंट है इस क्वेश्चन में, आइडियाज निकालना है। हमने इतना मोई कल पढ़ा है, ये नहीं बताया था, ये रह गया मेरे से कि अगर एक्सिस को हम हल्का सा टिल्ट करें थीटा एंगल पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। नहीं, अब तो ये क्वेश्चन हो गया, आईटी जेई का क्वेश्चन है, ट्राई करो।
Anyway, आंसर तो I will give you. क्या 6 का है बी, एक ही अकेला, अकेली. ओके, चलो लिख दिया, आगे बढ़ता हूँ. 7th, और लोग जिनका नहीं हो रहा लीव इट, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आपसे उसको ब्लैंक छोड़ दो. नेक्स्ट 7th, a cubical block of side A moving with velocity v on a horizontal smooth plane as shown. It hits a rigid riz at point O. The angular speed of the block after it hits O is. ऐसा होगा, टकराने के बाद वो टॉपल कर जाएगा. जैसे बच्चे नहीं गिर जाते दौड़ने वाले, ठोकर लगने से मुंह के बल दांत टूट जाता है. ठीक है. जीरो कैसे? अच्छा 7th का 7th नहीं कर पा रहे. 7th, अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सेवंथ का बी, चलो लिख देता हूं, आगे बढ़ता हूं. 8th का डी. ओके, और लोग, एनीबॉडी एल्स 8th का कोई और ऑप्शन? ओके. 9th, none of the question is actually from anywhere else except from IITJ. All the questions from JEE. So naturally standard is going to be good. Okay, that must be you feeling. So don't be dejected अगर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. Okay, क्वेश्चंस अच्छे ही होंगे तो कुछ न कुछ बेसिक कंसेप्ट कहीं न कहीं हमेशा कुछ आप सीखोगे अभी क्वेश्चन करने के बाद. 9, a disk of mass m and radius r is rolling with angular speed omega horizontal plane as shown. The magnitude of the angular momentum of the disk about the origin O. आगे बढ़े. 9th का ए. अच्छा जी. 10th, ITJ2. ITJ2.
रिवर्स, और बड़ा, और बस। There is an equilateral triangle and there are two beats. जो beats नहीं होते, जो उसमें होते, माले में जो होते हैं, these two beats are allowed to fall down from the top of the triangle. They are going down, जैसे एरो दिखा रखा है, and आपको ऑप्शन चूज करना है. IIT JEE 2000. Total angular momentum and moment of inertia. Total momentum and total inertia. चलो जी, एक तो सहमति है. 11. A cubical block of side L rests on a rough horizontal surface with coefficient of friction mu. A horizontal force F is applied on the block as shown. If the coefficient of friction is sufficiently high so that the block does not slide before toppling, the minimum force required to topple the block is ताकि वो टॉपल कर जाए. जब भी टॉपल करेगा ये, तो इसके अबाउट करेगा. ठीक है, तो समझ आ रहा होगा ना. अगर स्लाइड कर गया तब तो कर गया, अगर लुढ़का तो ऑब्वियसली पीछे से उठेगा तभी तो लुढ़केगा. तो जब पीछे से उठेगा तो इसी के अबाउट लुढ़केगा. तो ये आपका पॉइंट हो गया, जो पॉइंट ढूंढते हैं हम लोग अक्सर, पॉइंट ऑफ फिक्स पॉइंट. अब नाउ अप्लाई. हैं सी, किसने कहा सी? ओके, करके सॉल्व करके बता. गुड आंसर रटा हुआ मुझे, इसलिए मैं कर रहा हूँ. गुड, ठीक है. नेक्स्ट 12. Hurry up, ma'am started looking towards me. That means time is coming to end. And then she will say, "Bus, तो फिर I have to stop it." It's a ring only. You have to find the moment of inertia about the diameter. About the tangential axis. देखना यार, रो को इन्होंने लीनियर मास डेंसिटी की तरह लिया है. जैसे मैंने लैम्डा बोला था, they have taken rho as a linear mass density. Come on, tell me. These questions they can solve at home? No. How can they solve at home? Do they have the access of these questions? Acha. So they can download it. Okay. In Cyber Cafe. Hurry up, children. बताओ, which part? Move on. अगर नहीं कर पा रहे, it's only question was substitution only. This one. इसको तो मैं ऑप्शन ना भी दिखाऊं तब भी आपको बता दे. ऑप्शन नहीं भी दिखाऊं तब भी, बिना एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है बिना ऑप्शन के बता सकते हो क्या आंसर होना चाहिए. वेरी गुड. अब जरा ऑप्शन दिखा दो, क्योंकि ABCD लिखना है, MR2 तो लिख नहीं सकता. वेरी गुड. चलो कम से कम कुछ तो समझ में आया. 14. कौन सा रूल अप्लाई किया आपने? सब्ट्रैक्टिव रूल. ओके. 14. इसको भी बिना ऑप्शन दिखाए भी आपको बताना चाहिए.
कौन सा आंसर सही होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही. नेक्स्ट, इसमें लगना है दिमाग. There's an insect who is crawling now along the cord, one of the cord of the disc. And while the insect is crawling from one end of the cord to the other cord, answer me, moment of inertia will change or it will remain same? Will it increase or decrease, or it will do both? For half of the journey something else, for the next half something else. पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज या पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज? कोई तो लॉजिक होगा. ऑब्वियसली व्हेन द कॉर्ड तो सब जानते हैं कॉर्ड. तो जब आप एक एंड से कॉर्ड में आगे बढ़ोगे, आर यू मूविंग टुवर्ड्स सेंटर? ऑब्वियसली राइट एट द मिडिल ऑफ द कॉर्ड यू आर क्लोजेस्ट फ्रॉम द सेंटर. सो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, एंड देन इंक्रीजेस. B. No, but if moment of inertia decreases, then omega will increase. So C. Okay, then why not D? Why C? The fight between C and D here is whether it's going to be linear function or non-linear function. So वो है. और तो दोनों केस, ये भी increase कर रहा है, decrease कर रहा है, ये भी increase. तो बताओ linear या non-linear? Moment of inertia actually square of the distance पे depend करता है. Linear हो ही नहीं सकता कभी time. So it has to be which part? 15 C. चलो, वैसे I could have allowed you to do other 9 question also. 5 minutes. Okay. 16. What is impulse? Force into time. And what else? Or simply momentum. So impulse is given in the form of momentum, mv. So impulse has been given. Once you give impulse, the rod is bound to rotate. So find the, what would be the angular velocity? It's very easy. Find the angular velocity by applying the law of conservation of angular momentum before collision, after collision. टाइम ज्यादा लग रहा हो तो आगे बढ़ो. जितना नंबर यहाँ लिख रहा हूं उतना क्वेश्चन कर देते हैं. चलो 20 तक करा देता हूं. भैया लिमिट सर 16. A particle undergoes uniform circular motion. About which point on the plane of the circle will the angular momentum of the particle remains conserved? Center of the circle. Uniform motion. Particle is moving in circular motion. Actually, center only is the point whose distance is fixed always. Any other point if you choose, then the distance is not always fixed, and therefore angular momentum will be changing. So about the center, A part. Next. क्विकली, ये बहुत जल्दी बताओगे आप देख के क्वेश्चन. 3 पॉइंट्स है डिस्क में, एक सेंटर है, एक नीचे पॉइंट है, एक ऊपर पॉइंट है. सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? तो बताओ ना कौन सा आंसर सही होगा. चलो आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो, आगे बढ़ो. 19. A child is standing on a folding hands at the center of a platform rotating about its center axis. Kinetic energy of the system is K. The child now stretches his arms
so that the moment of inertia of the system doubles. ठीक है, आगे बढ़ जाए. सही है ना, गलत तो नहीं है. काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज. चलो, नेक्स्ट. ये आपने कैसे सोच लिया काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डबल हो जाएगी? क्योंकि अगर उसने काइनेटिक एनर्जी अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसने डबल किया तो एक चीज एंगुलर मोमेंटम का कुछ समझ में आता है हमें कि हाँ आई ओमेगा से अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो if earlier the omega was the velocity, then after stretching the hand, if the I becomes double, the omega becomes half. But मैं बहुत सरप्राइज हूँ आपके लॉजिक से कि आपने काइनेटिक एनर्जी को भी फट से हाफ कर दिया. ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है? आईटीजे की तैयारी करते समय हमें केयरफुली होना चाहिए. हमेशा कुछ चीज बोलने के पहले जरूर कंसेप्ट डाला करो. तो काइनेटिक एनर्जी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, ठीक है? क्या आपने फट से हाफ कर दिया? तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था. एनीवे, अब तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ लिख के. इसको कैसे करोगे? बाय द वे करते समय आप पहले ओमेगा, नया ओमेगा निकालोगे. फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो नया आई दिया ही है, नया ओमेगा आपने नहीं. नया ओमेगा कैसे निकालोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर 20th और 21st तो बिना मतलब ज्यादा टाइम लगाया बता सकते. 20th देखो. बोलो. The velocity is decreasing. Will there be any torque if the velocity is decreasing? Otherwise, how can you decrease the velocity? And if there is a torque, then will there be a conservation of angular momentum? तो जो पार्ट नहीं सही है उसको निगेट करते जाओ, किसी एक पार्ट पे पहुंच जाओगे. Acceleration A is towards the center. No, it is only for the case of uniform circular motion. Otherwise, there is always another acceleration. What is that acceleration? Tangential. And the net of these two, they never act towards the center. So B भी छूट गया. Particle moves in a spiral path with the decreasing radius. ऊपर दिया हुआ है particle moves in a circular path. तो C तो हो ही नहीं सकता. तो फिर क्या होगा? 21st देखो, एक छोटा सा हिस्सा काट कर निकाल दिया हमने डिस्क में से, लेकिन जो काट कर निकाला उसका रेडियस r/3 है. तो अगर इस r/3 वाले रेडियस के डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम सेंटर के अबाउट निकाल सकती हो, तो फिर जो रिमेनिंग हिस्सा है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाला जा सकता है. बाय विच लॉ? सबट्रैक्टिव लॉ. ठीक है? तो करके ऐसे तो बता आएगा नहीं बिना किए. हाँ सर, अगला पेज दिखाई दो इन्हें. एक दो क्वेश्चन इन्हें और दिखा दो. नीचे 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 नीचे. हाँ, I just want all of you to just give me the idea of these three questions quickly. There was a solid sphere which has been melted. Got it? Somebody has melted the sphere and recasted the sphere into a disc. And now the disc has been allowed to rotate like this. A solid sphere, when it was there, then the moment of inertia was I. Now the new moment of inertia of this particular structure about this axis has to be calculated. Idea. Mass obviously recasting. Mass remains constant. Then can you find the moment of inertia naturally? Because now the moment of inertia of this new structure, by applying the whatever law, parallel law, perpendicular axis, or whatever we can find, and then we can formulate this result, new result in terms of I. Option आ जाएगा आपको. Next. Very interesting. Half of the track is smooth and remaining half is friction, having friction. So this is with friction, remaining is
smooth, and the ball has been dropped from point A. पहले वाले में नहीं, पहले वाला स्मूथ नहीं है, पहला वाला रफ है. So it's rolling down. So at the bottom, which point? At the bottom, energy will be half mv square plus half I omega square. अब चला ऊपर चढ़ो. कौन सी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ऊपर जाते समय? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इसको कहां से बदल नहीं सकते आप इसे. फ्रिक्शन इज मिसिंग. ओनली फ्रिक्शन जनरेट्स टॉर्क, एंड इफ देयर इज नो टॉर्क, नो क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग द एंगुलर वेलोसिटी. दैट मींस वो तो फिक्स हो गया. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी विल ओनली रिमेन. सो विल इट गो टू द लेसर हाइट और ग्रेटर हाइट और द सेम हाइट, ये बताना है. पूरी एनर्जी अगर हमने पोटेंशियल में कन्वर्ट किया होता, यहां से एनर्जी ड्रॉप किया, यहां तक आया, पूरी की पूरी एनर्जी करने पोटेंशियल में किया होता, तो सेम हाइट. पूरी तो किया नहीं, कुछ बचा कर रख लिया, कुछ चुरा लिया मैंने, कुछ. कौन सा ऑप्शन होगा? HC is less than HA is the correct answer. ठीक है. 23rd लास्ट क्वेश्चन. 24. इसमें भी चूंकि टाइम नहीं है, इसलिए जस्ट गिव मी द आइडिया. देयर इज अ बॉडी व्हिच हैज बीन रोल्ड अप द इंक्लाइन, and at the maximum height it reaches the maximum height which is given as 3v square by 4g, and there is no slipping, it is a rolling. Now you have to tell me that what object was it a ring, was it a solid sphere, what is a hollow sphere, what is a disk? It's very easy, children, because depending upon the nature of the object, moment of inertia will be different, and since it reaches at the top, naturally the total energy in the beginning might have been converted into. ठीक है. Is it okay? So you convert that, and at the top the maximum height is given. So in terms of maximum height, potential energy can be written. That potential energy can be equated to the kinetic energy in the beginning. Now that kinetic energy will definitely consist I, and I will consist the information about the nature of the body. ठीक है. And you know that ring का अलग होता है moment of inertia. इसका sir answers, एक answer का पेज होगा, because online children are also watching. So just quickly note down the answers. Last 1-2 minutes. I'm so sorry that I've taken 5, 6, 7 minutes more today. Question number 1, C. लिखते बगल में लिख लो जहां आपने मार्क कर रखा है, तो पता चल जाएगा ना आपने गलत मार्क किया था और आंसर कुछ और है. क्वेश्चन नंबर 2, ए. किसने बोला था ए? पता नहीं, जिसने इसने बोला था. गुड. आज बहुत ऑनेस्ट चीज शो कर रहे हो. ठीक है, बट ए इज द रॉन्ग आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 3. ओके. 4, C. 5, B. क्या बात है, क्या बात है, कुछ सही भी है बच्चों के. 6 गलत, चेक कर लेना. 7th गलत, सारा ही गलत कर रखे. 8th, 9th, वाह जी वाह. 10th, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ. 12 किया ही नहीं, 12 का आंसर फिर भी लिख लो. ओके. 13, 14, 15 भी सही है. ओके. 16 किया ही नहीं. 16A. 17, 18, 19, 20th, 21st. आपने किया था 23rd का A, 24th का D. ठीक है. एनीवे, एक कुछ इसी तरह के रिजल्ट्स आपके उसमें भी आते होंगे. Thank you very much, children. It has been again pleasure to teach you that subject called rotational dynamics. See you again next time.
Girls. So yes, last time what we did, we were doing circle, right? And we were very smooth last time, right? And till where we reached? Tangents and normals. We were able to. We started with locus, and then we understood all the diametric form and all circles, right? And then we were actually on the poles part, right? The pole and the polar thing. So we understood that t is equal to 0 expression, right? And we also understood how to transform t is equal to 0 for any this was a general expression for any 2-degree curve, hai na? And we were able to write t is equal to 0 for all the expression. How? Axx1 plus 2h x1y by 2 plus so this was the transformation, right? Everybody remember that? And it turned out to be a great help for us, right? This was the story. Okay, so we understood that when the point was lying on the curve, then t is equal to 0 expression gave us the equation of tangent. And if that point is lying outside the circle or the curve, then t is equal to 0 expression gave us the chord of contact. And when the point was inside the curve, then t is equal to 0 gave us the equation of polar. So we understood what is pole and we understood what is polar. And we saw that polar is basically the super domain. है ना? All the tangents are polar. All the chord of contacts are polar. Right? All the tangents were chord of contact as well. है ना? आप tangent को ऐसे करते जाओगे तो आपका chord of contact अचानक से एक point पे आके तो we understood that this is the story. Tangent, chord of contact, and polar, right? The superset was polar, then chord of contact, and then tangent. You understand this set thing? Hai na? Okay. So we'll see the questions now. Till 40 questions we were done last time, hai na? Okay, so 41, we start with 41. So the question is, the chords of contact are drawn to 4x square plus 4y square is equal to 1. Is it a circle? Yes, it is a circle. From variable point on x plus 3y is equal to 10. Okay, this line is, there is this line and I'm trying to draw chords of contact. Then obviously this line is lying outside the circle. Then only I can draw chords of contact. Find the point of concurrency of this chords. How to go for it? If I say this is my circle, let's say this is my line. This line is x plus 3y is equal to 10. And this is so अगर मैं यहां से तो this will be 1, right? और कोई भी एक रैंडम यहां से बनाओ you have to find this point. How to solve this point? Should I write equation and then solve? Huh? Should I write equation? I'll take one point, let's say x plus 3y is equal to 10. Okay, I can say this point is 1, 3, satisfies this. And this point is, let's say 0, 10 by 3. Satisfy कर रहा है? ये करे क्या? It will take a hell lot of time. Find the equation, then find the point of concurrency. Then what should we do? We'll say this point as h comma k, and we will write t is equal to 0 for this expression. So this will turn out to be
What is the equation? This is the basically polar of this, and what is this? The same polar. So this should be equal to, then 4h by 1 is equal to 4k by 3 is equal to 10 is equal to 1 by 10, right? So my h becomes 1 by 40 and k becomes 3 by 40. See, if you would have written the equations, you must be seeing ki h is getting 1 by 40. Kitna difficult calculations hota, right? Now it is very easy. Clear or not clear? Clear? So it's very easy. T is equal to 0. We just have to understand where is my point. If I understand the position of point, it's very easy for me to write T is equal to 0, right? And T is equal to 0 is nothing but the polar of that point. P becomes the pole and T is equal to 0 becomes the polar. And if P is on the curve, then T is equal to that polar is tangent. If P is inside the curve, then that polar is polar. And that if P is outside the curve, then that polar is chord of contact. Clear? Any issue with this? 42. So same question, very easy. Just it's just a 2-degree curve ellipse. X square plus 2y square minus 6 is equal to 0, right? Find the polar chord of contact and tangent. पहला point क्या है? 2, 1. Is it lying on the curve? I think it is lying. Yeah, it is lying on the curve. So 2x plus 2y minus 6 is equal to 0. This is tangent plus chord of contact plus polar. ये तीनों हो गया, right? This is all the three, है ना? जो tangent है वो तीनों है. B, what is the point? 3, 1. Is it lying on the curve? Where it is lying, inside or outside? 9 plus 2 is 11 minus 6. That is positive. It means it is lying outside ellipse. Okay. And if lying outside ellipse means 3x plus 2y minus 6 is equal to 0. What is it? Chord of contact plus polar. Clear? Any issue? No. Third point, 1, 1. Where is it lying? Inside the curve. So it is going to be the polar. The following expression is going to be just polar. So x plus 2y minus 6 is equal to 0. And it is. So now see question number 43. Show that for all values of t, ty minus x minus t square is equal to 0 touches y square minus 4x. Ty minus x minus t square. T is what? Is it a parameter? Yes, it is a parameter. So how to go for it? How to go for it? Y square minus 4x. And we have to show that for all values of t, ty minus x minus t square touches. It means that that curve, that line is tangent to y square minus 4x. Okay. If I say I want to write the parametric form of y square minus 4x. How to write parametric form?
पैरामेट्रिक लोकस कैसे लिखते थे? हाउ टू राइट? पुट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर रख दो, x को मैंने क्या रख दिया? टी स्क्वायर, तो y क्या हो गया? टू टी. It will satisfy. Okay. Now this is the point on the curve. Now I want to write the tangent. T is equal to 0. So it is going to be t square y minus 4 into x plus 2t. This is going, okay, it is true for all the values of t. It is true for all the values of t. So what is this line? This is basically tangents, true for? Is it the same line? Okay, clear? We did some mistake or what? Okay, it will be 2t, right? And it will be, now it's fine, right? It will turn out to be 2ty minus 2x minus 2t square. Is it the same line? Yes, it is the same line. Okay? Is it the same line? So prove it's true for all the value of real numbers. Getting the idea? So this question was nothing but just testing your parametric locus of parabola, and then he was judging whether you will be able to write t is equal to 0 for that or not, because that becomes the tangent. So it's true for that. So we have just proved it. Any issue with this? 43? No? Everyone is with me? Okay. Now see question number 44. Find the polar of, same question. Just tell me fast. Answer me. All part A, B, C. You don't have to tell me tangent, or just you have to write the equation of polar. That it means you don't have to worry about the position of the points. 3x plus 4y minus 25, 2x plus 5y minus 25, and x plus y minus 25 is equal to 0. Okay, these are the three answers. Okay, so in examination you should be very sure कि क्या पूछ रहा है. If they would have been asking tangent, you should have made sure that okay, is it lying on the curve or not. If they would have asked chord of contact, you would have made sure कि is it lying outside or inside. He's asking polar, so he's asking you to be a little careless now. You don't have to see whether the point is lying anywhere or what. You just have to write t is equal to 0. Clear? Now, question number 45. You see, find pole of 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 for y square minus 4x. So when I say find pole of, I am asking you to find the point for which you are going to write t is equal to 0. So y square minus 4x, I'm going to call that point P as h comma k. So it is going to be ky minus 4x plus h by 2 is equal to 0, which I can write ky minus 2x minus 2h is equal to 0, and it has to be same as 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. So I can say that minus 2 upon 3 is equal to k upon 2 is equal to minus 2h upon minus 1. Clear? So minus 1 by 3 and k is going to be minus 4 by 3, right? Minus 1 by 3 comma minus 4 by 3. Any problem? No. So till 45 no issue. Can we go to 46? From a variable point on a line, chords of contacts are drawn to this ellipse x square plus 2y square is equal to 1. If the equation of the line is 3x plus y minus 7, find the point of concurrency.
What we have to do? Same drill. What point of concurrency gonna be? H comma K. So the equation gonna be Hx plus 2ky minus 1 is equal to 0. And we are going to say, do the comparison with 3x plus y minus 7, which is going to turn out to be h by 3 is equal to 2k by 1 is equal to minus 1 upon minus 7. Right? Hardly 5 seconds, these type of questions. 5 seconds, 10 seconds. So this idea of polar and t is equal to 0 is actually a great help, right? Okay. Now can we go to 47? 47 is a line 4y is equal to 3x plus 1 cuts x square plus y square minus 16 at A and B. Find the point of intersection of tangents at A and B. Okay, he's asking you, he's asking the same question, just he has turned the language. Let's say this is your circle. Okay, and he's saying that a line hai, let's say this is your line, it's cutting your axis at AB, and now he wants you to draw a tangents out of from A and B, and he wants you to find this point P. What is this point? Pole. And what is this point line? Polar. What is the equation of this line? क्या दे रखा है? 3x minus 4y plus 1 is equal to 0. ये दे रखा है. If I call this point as h comma k, this is x square plus y square minus 16 is equal to 0. So it is going to be hx plus ky minus 16 is equal to 0. Compare and get hk. Clear? Previous question it was direct find pole polar, find pole polar. Here he just used the language, right? So maybe in questions they won't ask what is pole, what is polar, but they are going to ask this way the questions, right? So you have to be very sure. You should understand what is pole, you should understand what is polar. Pole is the point and t is equal to 0, corresponding t is equal to 0 expression gives you the polar. Polar can be tangent, can be chord of contact, can be a line outside the curve. So t is equal to 0 is expression is clear, right? Now here see question number 48. Show that the equation of chord with midpoints x1, y1. So you have a circle and you have a chord and you have the midpoint. You understand the midpoint of the chord? It's just a perpendicular from the center. You have to show that the equation is t is equal to s1. You understand what is t? We have already understood t expression, x squared to be replaced by x1, right? And what is s1? The power of point. Power of that point. Power of circle nahi, power point ka hota hai. The power of point x1, y1. That will finally turn out to be a negative number. Why? Because that thing is inside the circle. Okay. You have to show this. So, सबसे पहले I am going to draw the diagram. This is your circle. Center is origin. Equation is x square plus y square minus r square is equal to 0. This is your equation, right? Now, let's say this is your chord, and let's say this is your midpoint x1 comma y1. So I know this is, so I know the slope of this line. What is the slope of this line? x1. So what is the slope of this line? ये होगा ना, ये हो गया y1 by x1. So ये obviously this will be minus x1 by y1. And I know I have to write the equation of this chord. I know the slope of this line. I know the point of this line. So point slope form. So I can say y minus y1 upon x minus x1. Okay. Now we'll do the cross multiplication thing. So it will turn out to be y1 minus y1 square is equal to minus x1 plus x1 square. Any problem here? I'll shift all the negatives here, all the negatives right. So it will be
right? What is missing? R square. Clear? T is equal to, it's true for all the 2-degree curves. It's true for, we won't prove right now, but we'll remember right now when we'll go to the further curves, we'll prove later that why it is true. But we must understand that T is equal to S1 is the equation of chord where x1, y1 is the middle point of the chord. T expression has been taken from the curve, whatever the 2-degree curve is, and S1 is nothing but the power of that point. Any issue with this? You can keep this thing in your mind. T is equal to S1 expression. Since T is equal to 0 also helped you, T is equal to S1 is also going to help you, right? T is equal to 0 was nothing but, if you observe, T is equal to 0 was chord of contact, then T is equal to 0 was, है ना? And then T is equal to 0 was this line, right? And he is saying कि अगर ये x1 y1 है तो T is equal to 0 is equal to S1. अब देखो ये चीज अगर तुम यहां पे ले आओगे तो मिड पॉइंट क्या हो गया था? इस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है? कर्व पे लाई कर रहा है ना, दैट इज व्हाई T is equal to 0 हो गया. ये आइडिया क्या हो रहा है? See, good. Find the equation of chord with midpoint. Chord का midpoint क्या है? -1, -2. कर्व क्या दे रखा है? It's any 2-degree curve. x square plus y square minus 10x plus 12y plus 2xy plus 1 is equal to 0. So you have to find what? The equation of chord. What is it going to be? T is equal to S1. So I can say my left hand side is going to be minus x minus 2y. Agree? X to be replaced by x plus x1, that is x minus 1 by 2 plus 12 into y is going to be replaced by y minus 2 by 2. Clear? Plus 2 into x into y1, that is minus 2x. y1 into x, y into x1, that is minus y by 2. 1 to be replaced by 1 is equal to the power of point, that is 1 plus 4 minus 10 plus minus 24 plus 2 plus 1, right? Clear or not clear? क्या नहीं समझ में आया? S1. What is S1? The power of a point. What is power of a point? We discussed last class. You just put your point on the equation of the curve. If it turns out to be positive, it means that point is lying outside the curve. Not for all the 2 degree. We'll discuss in later. किस पे कहाँ inside होगा, ठीक है? At least for circle, parabola and ellipse, it's true. If S1, the power of point is positive, it is lying outside. If negative, it's lying inside. 0 when it is on the curve. Clear? The S1 is nothing but power of the point with respect to that curve. Clear? What does positive sign of power and what does negative sign of power? We'll see. We'll interpret that. It is true for, it is positive outside thing. It's true for parabola. It's true for circle. And it's for ellipse. For hyperbola, it changes the sign. For hyperbola, negative means outside and positive means inside. So we'll see after. Slowly we'll understand all the ellipse, hyperbola, parabola. Don't worry. So till here, it's fine.
t is equal to 0 was equation of polar, and t is equal to s1 is the equation of chord of any 2-degree curve whose middle point is x1 y1. Clear? No issue? Next page. ये क्या हो गया? ऐसा क्यों आ रहा है? Okay, we can make it out. If a chord of y square minus 6x plus 2xy minus 1 is equal to 0 passes through 2, 2, find the locus of midpoint. So it's just the reverse thinking. We are going to consider my midpoint as h, ठीक है, हमें locus चाहिए. Locus चाहिए तो हमें पता है क्या करना है. Let the midpoint of chord be h, k. Any issue? No. So I can say the equation of chord is going to be t is equal to s1, which I can write ky minus 6 h plus x by 2 plus 2 into hy plus kx by 2. Clear? Minus 1 is equal to k square minus 6h plus 2hk minus 1. Clear? This is the equation. Now, is this equation passing through some line? Passing through point? What is that point? So it must satisfy 2, 2. So we must replace all the x by, पहले तो इसको हटा दो. So I can say 2, 2 से पास कर रहे हैं ना? So I can say 2k minus 3 into h plus 2 plus 2y plus 2x two h plus 2k is equal to k square minus 6h. ठीक है, यही चीज आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ लिख दो k स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2hk. क्लियर? क्लियर? दोनों का माइनस माइनस 1 मैंने काट दिया. ये आ गया इक्वेशन. दिस इज द लोकस. लोकस में क्या करते हैं, h को क्या से किससे रिप्लेस करते हैं, x से, और k को. So finally it will turn out to be 2y minus 3x plus minus 6 plus 2x is equal to x square y square minus 6x plus, this is the locus. Clear or not clear? Clear? Good question. समझ में आ गया कैसे हैंडल करना है इसको? गुड. सो वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ t is equal to s1. सो अब तो समझ में आ गया पोलर की जहां पे बात हो t is equal to 0 और मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड की बात हो t is equal to s1. What is x1 y1? The midpoint of that chord. And what is t is equal to s1? Equation of that chord. Clear? Find the locus of midpoint of a chord of a circle such that its distance of chord for 4, 3 is 3. Same story. We are going to take h, k, write the equation, and then from x and y we will put 4, 3 using the distance formula. Let's see what it turns out to be. So I'm going to say hx plus ky minus 4 is equal to 0, right? hx plus ky minus 4 is equal to 0, right? और नहीं, is equal to h square. So this is going to be the my t is equal to s1, right? Now
I can write that the distance of this line from 4,3 is 3 unit. So I can write mod of 4h plus 3k minus h square minus k square upon under root h square plus k square is equal to 3. So basically it turns out to be a 4-degree curve क्योंकि we have to square it up. So क्या हो जाएगा 4h square plus k square minus 4h minus 3k का square is equal to 9h square plus 9k square. It's a 4-degree curve. Okay. So till 51 no issue. Okay, we are now going into a new concept. So please pay attention. You understand power? है ना? You understand power. Now if I say कि there is 2 circles, I'm going to say that there are 2 circles. And I'll tell you that there is एक ऐसा locus बताओ जहां पे power of point with respect to both the circles remain same. Let's say if I say this is my P point, this circle 1, this circle 2, and let's say this is my point P1, P. तो मैं कहना चाह रहा हूं if I put P here also, I get the power. I put I here also, I'll get the power. I want to find all the locus of the point which I get the same power, which means the length of tangent, it should be same, right? It should be equal in length. तभी होगा ना ऐसा? इस locus में this locus turns out to be a line, because we can see that power are equal means S1 is equal to S2, right? S1 is equal to S2. So this is, if I say, let's say this point is H comma K. So if I say this line, this equation as x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 is equal to 0, and this as x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0, right? I put P as h comma k, I feed it there. Can I get the red color marker as well? So I see P h comma k. So what will the power? H square plus k square plus 2g1 h plus 2k1 2f1 k plus c1 is equal to h square plus k square plus 2g2x g2h plus 2f2 k plus c2. Finally, it turns out to be a line which is equal to 2g1 minus 2g2 x plus 2f1 minus 2f2 y plus c1 minus, this is nothing but, so we can make sure ki, okay, this line is, and this line is called radical axis or power line. Radical axis or power line. Okay. Now if I say this is my, let's say this is my circle, intersecting circle, and let's say this common chord. You can see this is a common chord. Will it be a radical axis? Yes, it will be radical, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ से obviously power same बन रहा होगा. Okay.
So radial axis is basically what? It's a locus of a moving point such that power of two circles remain same, equal, right? So that becomes your radial axis. That is the definition, right? Any issue here? No. So first thing you have to show that अगर दो circles हैं, दो circle हैं, ठीक है? So let's say this is your radial axis. Now what you have to prove, let's say this is your x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c1 is equal to 0, f1 of course, and this is x square plus y square 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0, right? What is the equation of this line? 2 this is the equation of radial axis. What is this center? Can I say this line and this line is perpendicular? Yes, I can say that, because the slope is going to be g1 minus g2 plus g1, matlab g1 minus g2 upon f1 minus f2. And what is the slope here? So if it will turn out, cancel out and turn out to be -1. Clear? So I can say radial axis and the line joining perpendicular, they are, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. So first point we have already proved it. Okay. अच्छा, equation of common chord is also nothing but s1 minus s2 is equal to 0. Equation of common chord क्या होगा? Same story, है ना? Equation of common chord. If they are intersecting, if they are not intersecting, obviously that common chord is nothing but radial axis only. Clear? यहाँ तो कोई issue नहीं है. No issue here. What is the slope of this line, beta? Minus g1 minus g2 upon f1 f2, slope of line, right? And what is the slope of this? f1 minus f2 upon g1 minus g2. I'm left with -1. That means that they are perpendicular, right? So the line joining the centers and the radial axis will always be perpendicular. Okay. Now second property which is worth noticing is that for any point on radial axis, length of tangents drawn will be equal. Of course, this is your point. Let's say आपका इक्वेशन ही तो इसी पे लिखा था, s1 is equal to s2. इसी से तो इक्वेशन लिखा था, लोकस लिखा था. So obviously this root s1 is going to be equal to root s2. What is the length of this? And what is the length of this? And the equation of curve is s1 is equal to s2. Equation of radial axis is s1 is equal to s2. So obviously the length of the tangents. So we can also say that radial axis is locus of all the moving point such that the tangents drawn from it to both the circles are equal in length. Any issue here? देखो ये क्या हो रहा है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, राइट? तो बेसिकली ये सेंटर बन गया ना, और एक सर्कल बन गया ना. ये हम लोग आगे चेक करेंगे, ये बड़ा स्पेशल सर्कल होता है. तो मतलब इस पे जो भी इस सेंटर पे ये सर्कल दौड़ रहा है ना, ये कौन सा सर्कल है, क्या है, हम लोग आगे सीखेंगे. सो मेक ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे एक सर्कल भी दौड़ रहा है इस पूरे इस पे, जिसका सेंटर इस पे दौड़ रहा है ना. अभी हम देखेंगे क्या सर्कल है, वो बहुत ही स्पेशल सर्कल होता है. ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है ना. अब देखो the third point, radial axis will be closer to circle with a smaller radius. Let's see how.
देखो, I know this is my radical axis. साफ डायग्राम बनाओ क्या? Okay. So if you observe this, you see this. Let's say this is your smaller circle, and let's say this is your bigger circle, and let's say this is your radical axis. We have to show that this is closer to this, right? It means if I join the centers, right? इस पॉइंट से मैंने दोनों पे टेंजेंट बनाया दिख रहा है? ओके, ये 90 डिग्री दिखा, ये 90 डिग्री दिख रहा है. If I call this length as L, what will be the length of this? L. No issue here. I can see this is my smaller circle and this is my, so I'm going to say this is small r and this is capital R. What is this length? And what is this length? So I can say under root L square plus R square में एक बड़ा कौन होगा? तो क्लोजर किससे होगा? तो ये बात हमेशा पता चल रहा है कि if I draw this two circles, I draw this line, this line, this line, this line, which is going to be my radical axis, right? This will surely be not radical axis. This surely will not be radical axis. This will be the radical axis. Clear? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? Radical axis की प्रॉपर्टीज पता चल गई? Definition समझ में आया? हमने देखा what is the length of the tangent from there? Equal होना चाहिए. That is the definition. That is the locus. And then we saw the line joining the centers and radical axis. They are perpendicular. And then we also saw that the radical axis will be closer to the circle with smaller radius, right? So this case mein this is your radical axis. This case this is your radical axis. Clear? This case this is your radical axis. This is your radical axis. Getting the idea? This is your radical axis. Obviously it will be here, है ना? And for concentric circles, no radical axis. There won't be any radical axis. Clear? So I just show you कैसे radical axis को identify किया जाता है, okay? Now you understand that radical axis has something to do with the power as well, right? We also call that line as power line also, because it has all the points from that you see the same powers with respect to both the circles. Now so you see 53 question. Find the power of 2, 3 for x square plus y square minus 1 is equal to 0 and x square plus 3y square minus 1 is equal to 0. So you can find the power. First one will be 13 minus 1, that is 12. And part B will be 4 plus 27, 31 minus 1, that is 30, right? Any problem in 53? No issue? Direct question? Okay. Interpret power for circle, parabola, ellipse and hyperbola. We have already done this. If
you will be writing your equation in a standard form: ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. If you put that point, if that curve is circle, ellipse or parabola, if power is positive, the point is lying outside. If power is negative, lie inside on the curve, 0. Clear? And it is has an exception with hyperbola, which we will be studying when we will be studying hyperbola. We'll discuss why. For when I get the power as positive, it means for hyperbola it is lying outside. And if I get negative for hyperbola, it means it is inside. And 0, of course, it is on the hyperbola. Right? Good. मैं लिख देता हूं. S1 positive inside, curves, circle, ellipse, parabola. S1 negative, सेम. ठीक है? ठीक है, इसके लिए समझ में आया. सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए ट्रू है ये, है ना? फॉर हाइपरबोला S1 अगर पॉजिटिव है, इट मींस इट इज इनसाइड and it is hyperbola. If S1 is negative, it means it is outside and it is hyperbola. If S1 is equal to 0, on hyperbola. Clear? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, अब सीधा है ना? मैं फिर से शुरू में उल्टा लिख रहा था. Clear? Any doubt? No. $55. Now see 55. It's a 6 marks IIT JEE questions, and it's a very good concepts. Yeah, that time subjective paper. So it's a very good concept. So these type of concept they are using in IIT JEE questions. So we are going to see this concept. So you see y is x minus 2 into x minus 3 into x minus 4. So can you draw this graph? आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, वेवी कर्व. उसमें आप you can say 2, 3, 4, right? Positive, negative, positive, negative. और 2, 3, 4 पे क्या होगा कर्व? टच करेगा. So it will be something like this. ऐसा कुछ कर्व होगा, है ना? ऐसा ही कुछ कर्व होगा. P is a fixed point here, 1, 0, right? And एक लाइन ड्रॉ कर रहा है P से 7/24 के स्लोप पे. This theta, so tan theta is, let's say this is P, so this is called PA, B, C, right? What you have to prove that find PA into PB into PC. You have to find the value of this product, PA into PB into PC, where PA, PB, PC are the sign distance. Okay, so how to solve this question? We did trigonometric equations, right? In equation, what was the equation meant? It was like finding the point of intersection of the line and the trigonometric function. यही था ना मतलब. Now I see this function and it is being intersected by a line. So basically I have to find the solution. If I call P1 as R1
PB is R2 and PC is R3. We can say that. So what is the general term of this point is going to be 1 plus R cos theta, comma R sin theta. This is the parametric form, right? This is going to be my parametric form, na? Parametric form of this line. 1 plus R cos theta, comma R sin theta. And this must satisfy this to find ABC. Getting the idea? So I must put this into this. Okay. So if I put this, what is my Y going to be? R sin theta. What is my X going to be? R cos theta minus 2 into 1 plus R cos theta into 1 plus R cos theta minus 4. Okay. Now my tan theta is 7 by 24. So my sin theta is going to be and my cos theta is going to be. So I got basically a cubic equation in R. 7 by 25 R is equal to 1 minus 2 is nothing but R. What is cos theta? 24 by 25 minus 1 minus 2 minus 3. Any problem here? You can see this is nothing but a cubic, and your R1, R2 and R3 is going to be the roots. Do you really have to find the roots, or you have to find the product of roots? And what is the product of roots going to be? Have you done quadratic equation chapter? If I say ax square plus bx plus c is equal to 0, what is the product of roots? C by a. If I am going to say ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, product of roots? Minus plus minus. So do you really have to solve this equation, or you just have to find the constant? You just have to find the constant and the coefficient of y cube. You just have to find the. So I see the coefficient of r cube is this is my a, right? है ना? And the constant term which is being produced is nothing but minus 1 into minus 2 into minus 3, right? और कोई कांस्टेंट तो बन नहीं पाएगा, सिर्फ यही तीन कांस्टेंट बन सकते हैं. minus 1 into minus 2 into minus 3, that becomes minus 6. So my d is minus 6. My product is going to be minus d, that is 6 by 24 cube into 25 cube. Clear? Okay. I know this is a curve and I know this is a line. I know the slope of this line. I know the point, fixed point on this line. So I can write this whole story in a form of. So I say that the parametric form of this line is 1 plus r cos theta comma r sin theta. Now I know this line is cutting this axis, so it must satisfy this line to. After putting it, I got the cube, and I know that tan theta is 7 by 24, so my cos theta and sin theta will be this. After putting all the values, I saw this is nothing but a cubic equation in R. So roots is going to be R1, R2 and R3 because it is cutting in 3 points. So obviously 3 roots will exist, right? I am not interested what R1, R2, R3 is. I am just interested in what is the product, right? I don't know whether it is cut, it will cut here or it will cut here. I don't know. I am not sure. मैंने तो डायग्राम में दिखा दिया है, जरूरी थोड़ी यहाँ हो सकता है यहाँ भी कट करो. I don't know. I am not interested in knowing. लेकिन obviously by final answer I can say ये यहीं कट कर रहा है क्योंकि I am getting all the positive thing. क्योंकि दो तो कट कर रहा है ना, ये तो obvious है, it's very easy to guess.
तीसरा यहाँ है, अगर नेगेटिव आ जाता फाइनल आंसर तो क्या होता, यहां कहीं कट कर रहा होता, बट इट्स कटिंग समवेयर हियर. गेटिंग द आइडिया? So you saw PA into PB into PC, that was nothing but product of sine distance. Now we will be developing this concept more in next questions. Y is equal to x square minus 1 is cut by a line of slope root 3. Okay, you know what is x square minus 1? It will be something like यही होगा. This is your y axis and the axis of this parabola also, है ना? And 0, 1 will lie somewhere here. This P, nothing but 0, 1. Clear? A line of slope root 3. ऐसा कुछ लाइन है, कितना बना रहे हैं यहाँ, 60 degree, right? It's cutting at 2 points A, B, let's say. यही 2 पॉइंट है. अच्छा, ये कैसे पता, कैसे हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं कि ऑब्वियसली ये एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ है? By showing that the product of sine is negative, है ना? So I can say this is 0, 1. I know this is 60 degree, so I'm going to write parametric form, which is nothing but r cos 60 degree, comma 1 plus r sin 60 degree, which is equal to r by 2, comma 1 plus, यही होगा. Clear? No issue till here? Okay. Now I know the equation is y is equal to x square minus 1. So I can feed it here to find my a comma b, a and b. So this will be 1 plus root 3 by 2r. This is my y is equal to r square by 4 minus 1, right? What is it? Is it a quadratic equation? So I'm writing it in again in a better way. R square minus 2 root 3r and minus 2 into 4, that is minus 8. ठीक होगा ना? ठीक है, मैंने 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो this 4, this minus 4, so minus 8 and then this is 2 root 3. ठीक है? This is your quadratic equation. Now I'll start solving the questions. Find PA into PB. पहला part PA into PB, the product. What is it? Minus 8. It means opposite signs. PB is positive and PA is negative. I don't know by what, I'm not finding the roots. Right? I'm not finding the roots. He is not even asking me to find the roots. The second part, PA plus PB, he's just asking me to find sum of roots. 2 root 3. So PA plus PB, I tell you this is not this length. क्या आ रहा है 2 root 3? ये 2 root 3 ये length नहीं है. This minus this है. This length minus this length है. Remember, because the product is telling me that they are of opposite sign. And sum of, okay, clear, no issue, है ना? Okay. So PA plus PB is just asking you sum of roots, nothing more than that. Third, difference of length PA and PB. He is asking you the difference of length. I know PB is positive, I know PA. So he is just asking me to find PB minus PA. Ka mod. I don't know which one is greater.
But I know PB and PA are, they are of opposite sign. So I can say mod of PB, and this is nothing but sum of roots. So answer would be same. Clear? Any issue till here? No. Now it is asking you to find mod PA into mod PB. Simple product का mod ले लो. Now he wants to find you sum of length. Means he wants to find this plus this. Basically he wants you to find mod PB plus mod PA, which is nothing but PB minus PA. And what is it? Difference of roots. And how to find difference of roots? Sum of roots minus 4 into product of roots का अंडर रूट, जो कि sum of roots क्या हो गया? 2 root 3 का स्क्वायर 12 minus plus 432. So this is going to be the total length 2 root 11. Clear? तुम देखो अगर तुम क्या कहते रूट्स निकालते भी, इसको सॉल्व करते तो भी आ जाता, सॉल्व करते R1 R2 निकल के आ जाता, ठीक है. बट वाइट हम चलो ये क्वाड्रेटिक है, हमेशा क्वाड्रेटिक थोड़ी रहेगा, और ऊपर से इतने सारी चीजें सॉल्व करने के लिए फिर प्रोडक्ट निकालो, ये करो, डिफरेंस ऑफ लेंथ बार बार इंटरप्रेट करो. इसमें क्या है कि वी आर जस्ट प्लेइंग विद इट. ये तो डायग्राम बना लिया ना, इफ अगर डायग्राम भी नहीं बनाएंगे तो वी कुड हैव सॉल्व्ड इट just using these concepts, right? Now you must be wondering why are we discussing this? Because when we were in class 10th you proved it that to PB ये वाला नीचे वाला प्रूफ किया था, है ना, by similar triangles कुछ कट कुट करके. Now we don't have to prove it by similar triangle. First we are going to prove that PA into PB is the power of this point. Okay, let's see how. Let's say I can any day I can put my circle center on this, and this point I'm going to make this point as origin. I can make that, no issue with it, right? What is the equation of this circle going to be? X minus a k square plus y square is equal to b square, right? This is the equation of the circle, no issue till here. Okay, this is ये theta होगा, कोई भी कुछ एंगल तो बनाएगा ये theta. Theta is parameter which is changing, so I can say parameter would be r cos theta comma r sin theta, which will satisfy this, है ना. ये r radius नहीं है, ये इसका parameter है. Okay, till here no issue or issue? Everything's fine. So I'm going to put this into inside this equation. So it will be r cos theta is equal to b square, right? So it will be r square cos square theta, r square sin square theta. So theta will vanish up, theta will go on minus 2a cos theta r plus a square minus b square. यही होगा. If I call this as a, this as b, what is PA PB? यही होगा, यही होगा.
And what is the power of P? Put x is equal to 0 and y is equal to 0, you will get clear. So we can say PA into PB is equal to power of P, hence proved, and we can use directly here anywhere. Proof कैसे हुआ? And see, जब first time IIT JEE would have asked that question, this is also IIT JEE question, this one 56. So when IIT JEE was asking these type of questions, he was not asking this question, he was asking this question, whether you know this result, how it is coming or not. You're getting the idea? IIT JEE, whenever they ask the questions, they always ask on the basics, how the theorems or the proofs or the results are coming up. If you understand how the results are coming up, you will be able to tackle all the IIT JEE problems. It's mostly, it's not on new questions coming up with the result, using the result. It's more how the results are coming, and they are using the basics behind the results. Okay, how those results, they're like Euler's line we proved. He's not going to ask what is Euler's line and how the ratio, and he's not even going to ask prove Euler's line, but he's going to create a problem which can be tackled through how we tackled Euler's line proof. Clear? So similarly, we can also prove this. PA into PB is equal to PT square, which we have already proved geometrically in class 10th. है ना? और अब वैसे भी prove कर सकते हैं. Just put things on that and everything will be fine. Okay? So till 57, no issue. Can we go to 58? Please come to 58. Same question, just try this. Let's see you have understood the concept or not. X square plus y square minus 36. A line of slope root 5 is drawn at intersecting at A and B. B is 2, 1, lies on line. Okay, same story. PB is nothing but product of root. PA plus PB is nothing but sum of roots. And mod PA minus mod PB is nothing but difference of length. Difference of length. So who can tell me about the opposite signs? If this turns out to be negative, it means PA plus PB. If it turns out to be positive, का mod तो finally अगर negative आया तो उसको positive कर दो, अगर positive आया तो negative कर दो. Clear? Solve करो. If tan theta is root 5, your sin theta is going to be root 5 by root 6, and cos theta going to be ठीक है. So your P any random point on the line, कौन सा point दे रखा है? Fixed point 2, 1. So 2 plus r by root 6, comma 1 plus r root 5 by root 6. This will be satisfying x square plus y square. X square turns out to be 4 plus r square by 6 plus 4r by root 6. Y square turns out to be 1 plus r square 5 by 6 plus 2 root 5 by root 6 r minus 36 is equal to 0. So r square turns out to be r square. ये खत्म हो गया है ना. और 4 by root 6, 4 plus 2 root 5 by root 6 r minus 32. So product is negative. So they are of opposite sign. Product is 32. PA minus PB, that is minus 32. Sum will be minus of this. It means which is heavier? The negative one is heavier. That is why sum, है ना? And the difference of length, obviously, difference of length is nothing but PA plus PB. वही होगा. Same story. Clear?
with the mod. Now see, I'm just talking, let's say if I've written 4 expressions down there. Alpha cos square theta, you write it, it's very important. If I say alpha cos square theta plus beta sin square theta is independent of theta. What I am saying, that alpha cos square theta plus beta sin square theta is independent of theta. This is only true when alpha is equal to beta. Otherwise, it's not true. Okay. And when I say alpha sec square theta plus beta tan square theta is independent of theta, it is only true when alpha is equal to minus beta. Because we know sec square theta minus tan square theta is constant, right? You must be understanding how these things are coming. Alpha cosec square theta plus beta cot square theta is independent of theta. Again, it means clear or not clear? Clear? And when I say alpha cos theta plus beta sin theta is independent of theta, it means alpha is equal to beta is equal to 0. Then only it's true. Clear? No issue till here? Can we go to next page? ठीक है? Y square 4x, AB is a variable, line P is a fixed point on x axis. P point मैंने दिया नहीं है क्या? Okay, no issue. Same story, है ना? Now when I say 1 upon PA square plus 1 upon PB square, I'm going to write in a better way. Which is nothing but क्यों मैं ऐसा लिखा? Because the quadratic equation I can put my sum here and product here, right? And similarly 1 upon PA upon plus 1 upon PB भी वैसे ही लिखेंगे, है ना? Okay. Now P is a fixed point. I'm going to call P as alpha comma 0. है ना? It's a fixed point. I have to find P only. So my parametric form of AB line is going to be alpha plus R cos theta comma R sin theta. यही होगा ना? And it must satisfy my equation, which is nothing but R square sin square theta is equal to 4 alpha plus 4R cos theta. ठीक है? So I got my quadratic something like R square sin square theta minus 4 alpha minus 4R cos theta minus 4 alpha is equal to 0, right? Now I am going to put it here. What is my sum of roots? 4 cos theta upon minus 2 into what is PA into PB product. This will be minus 4 alpha by minus minus plus alpha by sin square theta upon
16 अल्फा स्क्वायर अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा। क्लियर, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट विल टर्न आउट टू बी, ये हट जाएगा इससे, ये हट के यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर, और क्या हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 16 अल्फा स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब ये एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ये एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कब होता है? दिस इज इक्वल टू दिस, सो 8 अल्फा इज इक्वल टू, क्लियर, सी दैट कॉन्सेप्ट हेल्प्ड अस, जो हमने 4 कॉन्सेप्ट्स अभी लिखे थे, है ना? सो यू गॉट हाउ टू सॉल्व इट? क्लियर, इजी, डिफिकल्ट? Easy. Same story, 1 upon PA PB, that is PA plus PB upon PB. PA plus PB upon PA PB. So what is PA plus PB? 4 cos theta. दोनों का A same है, तो we don't have to worry about. And this will be minus 4 alpha. A है ना? And it is independent of theta. Constant मतलब independent of theta. Cos theta upon minus alpha. ये कभी होगा? Not true. कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है? It will always depend on theta. Clear? See question number 60. देखो ये क्लास 10th की चीज है, बताओ कैसे होगा। पहला वाला तो पाइथागोरस बता दिया। A B C, I am dropping a perpendicular here. P Q R B A C, ये स्टोरी है ना, and this length is P. सबसे पहले प्रूव करना है A square plus B square is equal to C square, Pythagoras theorem, we know that, proved, right? Now let's say I'll call this as alpha, this is beta, right? अब हमें क्या प्रूव करना है? 1 by A square ये कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? We'll again use Pythagoras theorem. I know sin square alpha plus cos square beta. I know this, है ना? If this is alpha, I am going to talk about this triangle. So what is sin square alpha? P square and if you observe this is alpha, and if I am going to say cos alpha, है ना, ये याद रखो, 1 upon A square plus 1 upon B square is equal to 1 upon P square, और तीसरा P square is equal to Q, और सिमिलर ट्रायंगल से हो जाएगा P by Q is equal to R by P. Clear? ये actually you should remember these 3 properties. That is why I gave, क्योंकि next question में वैसे ही concept use हो रहा है, तो normally हम भूल जाते हैं ये सब चीजें. That is why I repeated this concept. So when I see this, कि okay, this is my point. If I dropped up, then this length P square is the product of these 2 lengths, right? If I drop this,
p square, then this is product of these two lengths. One thing. Now other thing which was this side and this side, height and iska opposite, iska reciprocal ka squares is equal to reciprocal square of this. Okay. Now see 61, question number 61. You have x square plus y square minus 6x minus 8y minus 2 is equal to 0, right? This the equation of circle is given. And there is this q.11 inside the circle. And there is this line AB, and it has given QA is perpendicular to QB. Find the foot of the locus of perpendicular dropped from Q11 on AB. Okay. So this is Q. This is AB. This Q 90 degree. This is the story. Now Q is 1, 1. Find the locus of foot of perpendicular dropped from Q on AB. मतलब यहाँ का locus निकालना है, h, k निकालना है. Right? I know PA into PB is equal to power of PA into PB is nothing but power of P. And I also know PA into PB is equal to this length. Clear? Any issue till here? I know इस दोनों को इससे बराबर की इक्वेट कर सकते हैं. My P point is h, so what is going to be my PQ? H minus 1 ka whole square plus K minus 1 ka whole square is equal to the power of P with respect to the circle, h square plus K square minus 8K बस हो गया. रिप्लेस h by x and k by y. h स्क्वायर दफा कट जाएगा, लाइन बन के आ जाएगा. क्लियर? इजी क्वेश्चन. सो अगर हम लोग वो 60 का कॉन्सेप्ट नहीं सोचे होते तो फिर परेशान हो जाते. एक तो हमें दिखता PA into PB is equal to power of P क्योंकि we have been exposed so much of power with power. लेकिन PA into PB टाइम लगता, ट्रायंगल्स बहुत सारे चीजें खोलनी पड़ती प्रॉपर्टी, लेकिन we were very specific. Okay, these are the results, right? So 60 should be remembered as a funda for you, right? It should be remembered as a funda. Now see to question number 62. So there are 4 common tangents to circle S1 and S2. Obviously, if they are non-intersecting, and we last time we counted that, है ना? So ABCD are midpoints of the 4 tangents. Then find the मतलब क्या है देखो, diagram draw करो. ठीक है, these are my 4 tangents. ठीक है, let's say this is the midpoint of A, let's say this is the midpoint of B, let's say this midpoint of C, let's say this midpoint of D, right? तुम्हें इस quadrilateral का area निकालना है. So what is the area going to be? What does it mean when I say midpoint? Huh? The length of tangent from both sides are equal. It's on the mid path. It means the power of this point equal. इसका ये मतलब क्या, ये चारों कहां लाई कर रहे हैं? रेडिकल एक्सिस पे. तो ये ऐसे हैं, तो ये क्या है? कोलिनियर हैं. आर दे मेकिंग एनी क्वाड्रिलेटरल? नो, द एरिया विल बी 0. So it's just
checking your concept of the definition of your radical axis, right? Understood? They are not going to ask you, okay, khud se. You have to decrypt it. The information will be encrypted. You have to decrypt it. Then only you will be able to find the answer, right? They are not going to say, okay, do this, do this, do this. You should know how to decrypt it. Okay, you should understand the language. Next page. So till here everything's fine? Enjoying the circle? Good. Fifth page था. ये सारे स्कैन नहीं हुए. Okay, I'm discussing. आप जब तक स्कैन करा लो. देखो ये कह रहा है कि there are 3 circles. Okay, last question was. आप उसको वो करवा लो. Scan it. Last question was like it say there are 2 circles and then he was telling you that 4 common tangents have been drawn, right? And he was telling that A is the midpoint of this tangent, B of midpoint, C, D, ऐसा कुछ कह रहा था. Clear? So when I say midpoint, it means इसका power same है, B का भी power same है, C का भी power same है, D का भी power same है. When all the 4 points have equal powers with respect to both the circle, it means all the 4 points are lying on radical axis. Radical axis is nothing but line, so they are actually collinear. So can 4 collinear points create a quadrilateral? No, so the area is going to be 0. Now let's say there are 3 circles, 3 non-concentric circles. These are 3 non-concentric center circles, है ना? And he's telling you, let's say I'll call this circle as 1, this as 2, this as 3. Okay. He's saying that let's say this is your radical axis for 1 and 3. Okay. And let's say this is the radical axis of 2 and 3. So it must be meeting at some point. Obviously they are this is radical axis 2, 3. Clear? Now he wants to say he wants you to show that the radical axis of 1 and 2, radical axis of 1 and 2 should also pass through P. You have to prove it. You have to prove it. Let's see how to prove. Can you prove it? It's already given that P is the point जहां पे radical axis 2, 3 और 1, 3 हैं, meet कर रहे हैं ना. हमें prove करना है कि ये भी यहीं से pass करेगा, right? It means we have to prove that this is also have same power with respect to 1 and 2. 1 and 2 के लिए निकाला है ना, this is radical. ये prove करना है ना कि ये भी pass करेगा. Basically prove करना है कि 3 non-concentric circles का 3 non-collinear circles का radical axis they are concurrent. We have to prove that. So I'm going to call this point as P. When I say this is radical axis 1 and 3, when I said this is radical axis 1 and 3, I can say, let's say this is PA, PB, PC, PD. So PB is equal to PC.
ये दोनों तो इक्वल है ही, ये भी इक्वल होगा, यहां तक कोई इश्यू है? नो. नाउ आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व रेडिकल एक्सिस 1 and 3, which means, right, this is also equal, this is also equal. Clear? Now I am going to draw the radical axis 1 2. ये जो है 1 2 means this and this, are they equal? So this is also radical axis for 1 and 2 also, so of course it will pass through. Clear or not clear? Clear na? See, this simple question that, okay, radical axis of 1 and 3 and 2 and 3, they are meeting at point P, then obviously the radical axis of third, it's more like medians concentric hai, angle bisector concentric hai. So yes, the three non-concentric circles ke, I'm always saying concentric, it's collinear, non-collinear circles के radical axis के point of intersection concurrent होंगे. Clear or not clear? Clear? So the same, we have already proved three circles with non-collinear centers. If P is the point of intersection of RA circle 1 and 2, and show that RA circle of 2 and 3 also pass through P, that is all the three radical axes are concurrent. Proved? Okay. अच्छा, ये तो था कि चलो जब नॉन कोलिनियर सेंटर्स हैं, राइट? ओके, दिस P पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर, और यहां से ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है, दैट इज रेडिकल सर्कल. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. वी ऑल्सो डिस्कस दैट ऑल्सो. सर्कल एक और बन रहा था ऑन द रेडिकल एक्सिस, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस सर्कल एज वेल एज दैट सर्कल, सो डोंट वरी. व्हाट इज द स्पेशलिटी? Now say if the centers are not non-collinear, if they are collinear, then if they are collinear, either it will be the case like ऐसा केस होगा, so इसका रेडिकल एक्सिस ये हो गया, इस दोनों का रेडिकल एक्सिस ये हो गया, और इन दोनों का रेडिकल प्रोबेबली ये हो गया. Clear? So they are never meeting, they all three radical axes are parallel. Or it could be like, so this is going to be your radical axis, right? So it is also, so you are getting the idea, only when you have non-collinear concentric circle, non-collinear centric circles, then only you will have your radical axis as concurrent, else it will turn out to be a parallel line or a single line. Clear? Next page. Next question. Okay, now he's saying three circles don't have a radical center. It means they don't have, matlab iska matlab hai they are not non-collinear, they are collinear. He wants to say that three circles are collinear, that's it, and the question is done. You have two circles, find the equation of path traveled by the center of third circle. It will be the line passing through both the centers. Getting the idea? The locus will be, what is the center of first line? 2, 1. And what is the center of second line? 3, 2. It will just be a line passing through 2, 1 and 3, 2. And वहां पे आप कोई भी point ले लो, वो circle draw करो, that will have no radical center. Clear? Getting the idea? Good. Do you know how to open a determinant? No? I'll just tell you how. In details you will learn later. Okay? If I say this is A, B, C, D, E, F, G, H, I, you have to find the value of, okay, if you see this, right, you have to find the value of the determinant, right? So if you see, if I'm going to call this as
choose any of the row or column. ठीक है, कोई भी एक रो या कॉलम चूज कर लो. Let's say I want to choose any row. Let's say this row. So I'm going to assign first thing as positive, this thing as, and this thing as positive. Okay. So I'm going to write this as G with some bracket minus H with some bracket plus I with some bracket. Clear? Whatever is, if I would have chosen ABC plus A with bracket minus B with bracket plus C with bracket. Clear? Now, when I have to write, if I have chosen G, H and I, so what is the bracket going to be? I'm going to hide these two. I'm going to hide these two. Okay. This row and this column, this row and this column, right? And then I'm going to cross multiply BF and EC, left to right with first. Okay. The same drill for minus H. I'm going to hide this. So it will be AF minus, okay, and this will be, this is how we are going to find the determinant. That is just a working rule. We'll discuss how later on in some other topic. Okay, till here it's fine. You know how to find the determinant. It's no issue here. Okay, one more property, that whenever you find 3 into 3 determinants की value निकालनी है. So if you see any two rows or any two columns have same ratio, then the determinant turns out to be 0. You don't have to find the value. तुम अगर calculate करोगे, it will turn out to be 0. Even if you calculate it, it will turn out to be 0. You can directly write that also, that the ratios of the rows and the columns are, we'll tell you in later. So if the 2 comes out to be, that will turn out to be 0. Clear? So you see 65 show 1, 2, 3, 3, 6, 9, 1, 1, 2 is equal to 0. Obviously 1, 2, 3 and 3, 6, 9, they are in same ratio, so it will turn out to be 0. Clear? आप calculate करके भी check कर सकते हो using this. Let's see. One, two, three, 3, 6, 9, 1, 1, 2, right? ये last row ही choose कर लेते हैं. 1 with some bracket, minus 1 with some bracket, plus 2 with some bracket. 18 minus 18, 9 minus 9, 6 minus. Clear? See, area of a triangle, आप हमने area of triangle निकालना सीखा था, area of polygon also when the coordinates are given, right? We learned it. But when the equation of sides are given, when we have to find the area of triangle, when only the equation of sides are given, one way is find the point of intersection and then find. The other way is to find the area of triangle. You will say half into, if I'm going to say ax plus b1y plus c1 is equal to 1 equation, a2 wala and a3 wala same. We have 3 lines. So I'm going to say square upon bracket of C1, bracket of C2 into bracket of C3. When I say bracket of C1, ऐसे क्या है, हाइड करो, खत्म करो, ठीक है. फाइनल स्टोरी मॉड की है, एरिया निकालना है, so you don't have to worry about the sign as well. So just have to take the brackets. और ऐसे भी लिख सकते थे a1 a2 a3, इसको रो कन्वर्ट कर लेते a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसे भी ले सकते थे. So the idea is bracket of c1 है ना, लास्ट वाला कोई भी एक ले लो, ठीक. Only the bracket, no plus minus. Or final answer, even if it's coming negative, don't worry, we are just finding the area.
So it will be mod. Only the bracket of C. Matlab whatever, if you want to choose the bracket of this or want to choose the bracket of this. Clear? No problem till here? Okay. We can take. But we should make sure कि उसमें सही वो corresponding parts ले रहे हैं. We make sure that we are taking the corresponding. But it won't be that we are taking the bracket of A1, then we are taking the bracket of C3, and then we are taking the bracket of A2. ऐसे नहीं. Either C1 symmetry. You should maintain the symmetry. Okay. Basically, matrices is all about structure, and you are finding the determinant. So till here, you just understand how to find. Don't go into detail. When you will be in class 12, you will be understanding what is matrices, what is determinant. Till here, just understand how to calculate determinant. If you see rows with the same ratios, the determinant is going to be 0. And the area of triangle is A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 का square upon bracket of C1 into bracket of C2 into bracket of C3. Constants mind में रखो ना, constants, no confusion. Constants के bracket ले लो. It doesn't, constant तुम कभी भी हटा सकते हो ना, बदल सकते हो. Clear? Bracket of C1 is like A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Here I meant to say bracket of C1 is A2, B3, bracket of C2, I'll hide everything, A1, B3 minus B1, A3, and bracket of C3, I'll hide everything. Clear? Till here everything's fine? है ना? So you saw, so we understood how to find the determinant. We saw that 1, 2, 3, 3, 6, 9, whenever the same ratios are, it means determinant is going to be 0. Area of triangle whose 3 sides of equations are given, we can find the area. Right? Till here, no issue? Can we go to the next page? Okay. So it just check your answer. X plus y plus 2 is equal to 0, x plus 2y plus 3 is equal to 0, and just find your answer. 66. Are we going fast? Why? Yeah, x plus y plus 2, x plus 2y plus 3, 3x plus y plus 1 is equal to 0. Any doubt on the online thing? No doubt? Done. So see, I have got 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1. ठीक है? And 2, 3, 1. Right? Clear? Okay. Shh. No issue? Okay. Now I have to find. So I'm going to choose. चलो इसकी की ब्रैकेट निकालना है तो इसी को चूज कर लेते हैं. 2 into 1 minus 6 minus 3 1 minus 3 plus 1 2 minus 1. ये ब्रैकेट याद रखो सबके, है ना? वो हमने कर लेंगे ना. You just find the determinant. ये ब्रैकेट याद रखो. So 2, 5 minus 10
plus 6 plus 1, so minus 3, basically 3, है ना? So the square becomes 9, half रखना था, half square upon bracket. Bracket क्या है? minus 5 minus 2, that is 10. Clear? 5 into 2 into 1. So answer would be clear. Okay. No issue till here. So now we understood one thing, that if my 3 lines, if the determinants of 3 lines turn out to be 0, it means the area found by these 3 lines are 0. It means these 3 lines are either concurrent or parallel. I'm not talking about points now, I'm talking about lines. So they are going to be parallel. So if I say the determinant of a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3 is equal to 0, it means either they are concurrent or they are parallel lines, right? अब समझ में आ गया, दो parallel lines जब दोनों का रेशो, रो का रेशो सेम हो जाता है, it means they are parallel lines. That is why that will turn out to be 0, the determinant. Okay. Now observe this, true or false. Okay, tell me, true or false. If a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0, then a1x b1y c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and a3x b3y c3 is equal to 0 are concurrent. True or false? True or false? Can anyone say false? It's false. No, we have missed one thing. If this is equal to 0, it can be parallel as well. The vice versa is true. Okay, minus 3. Actually, it is actually minus 4. 3 marks would have been given for this question and you lost it. And then you also lost 1. So basically it is minus 4 to your score. Why it is false? If that is equal to 0, it means either it is parallel, they are parallel or concurrent. Parallel वाले option हमने छोड़ दिए. But if you're getting the implies and implied upon, if I would have said these are concurrent, then this is equal to 0. Yes, true. If I say this, it is not necessary they are concurrent. It can be parallel as well, right? This is mathematical language. Okay. 68. Radical axis of 3 circles are. Find P. अगर radical axis है, can I see, are these x plus 2y plus 3 is equal to 0 and x plus 4y plus 5 is equal to 0? Are those two parallel? No, they are not parallel. It means they are meeting. It means all the 3 radical axes will be concurrent. तो इसका मतलब क्या होगा? How to show this? How to find P? Solve it and find P. Clear or not clear? See how these concepts are adding up, and we forgot almost our radical axis, right? And then we went into something other concept, and then we brought that thing again. See, we have understood various concepts, and then we came back to the power concepts, then power concepts a radical axis concept, and the radical axis, then we went to the quadratic equation concept, and then again we came back with the sign distance concept. So these are the things which needs to be done, which needs to be manipulated. We have started, when we started the circle chapter, we were very fast because we were using our past knowledge of things. We were not finding the points and finding the distance, right? Okay, no issue.
Try to connect how things are coming up. Try to knit a story. Every chapter should be connected to each chapter. Suddenly, if I stop something and then I stop afresh, something very new, it means either it has come to dead end or I don't know the connection between these two. There should be a connection if it is in the same topic, right? You should understand that connections, the story, right? When you're creating your lecture notes, you should understand that path. Okay, this is why. Okay, suddenly sir was talking about this. Why he was talking about this? It should make sense why he is talking about this. Okay, now I say radical axis of circle 1 and 2 pass through center of 3. Radical axis of 2 and 3 pass through center of 1, and show that radical axis of 1 and 3 passes through the center of 2. How to show this? I see 3 circles. Let's say this is 1, this is 2, this is 3. Radical axis of 1 and 2 pass through the center of, ठीक है? Radical axis of 2 and 3. Radical axis of 2 and 3 pass through. Show that radical axis of 1 and ये शो करना है, राइट? यही शो करना है, शो कर दो. कैसे शो होगा? हाँ, ये क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर हो गया प्रूफ. इसमें क्या इशू है? राइट, it's nothing but ortho center. Of course it will pass through that. Clear? It's very obvious. Now you have to prove that ortho center is basically concurrent. You can want to prove it. Explain question 44 again. What was question number 44? Don't go to that page, I'll just see. Polar. Shh. You need to revise, you need to see the last class lecture. Go to, when you get back home, please see the last lecture video. You will be able to understand what I am talking about pole and polar. Probably you have missed the last class or you didn't pay attention in the last class. Okay. 68, any question? Okay, we are back to the questions, right? So 69 is done. Should we go to 70? Okay. Now here we are going to talk about angle of intersection of two curves. When I say two circles are intersecting, let's say these two circles are intersecting here, right? I want to know the angle of intersection. What does it mean? What angle of intersection? कैसे angle निकालूं मैं इसका intersection का? कैसे निकालूं angle ये? No. Here I'll draw a tangent, and at the same point I'll draw a tangent to this circle. And the angle between these two tangents is called angle of clear? So angle between two tangents at point of intersection is called angle of intersection of curves, right? No issue till here? Now you were saying that कि सर center से angle निकालने वाला.
Okay, let's say this is theta and this is alpha. Show that alpha plus theta is equal to pi. Show that alpha plus theta is equal to pi. How to prove it? I know this is your, let's say this is R1, this is R2. So I know this is 90 degree. I'm going to call this line as X. This is outside जो बंदा पड़ गया X, और this is 90 degree, right? I'm going to call this as Y. So I know alpha is theta plus X plus Y. हमें प्रूफ क्या करना है? Alpha plus theta is pi. But I know this angle is 90 degree, which is nothing but theta plus Y. And then theta plus X is also 90 degree. So I can say that theta plus X plus Y is equal to 180 degree. So I can say theta plus alpha. Hence proved. कोई ये तो नहीं बोला 180 डिग्री कैसे पाई आ गया? Okay, till here everything fine. So angle between the intersection of two curves is the angle of tangents at the point of intersection, and you know for circle the angle between the radius and angle between the tangents, they are supplementary. Okay, so now this concept will help us in finding the angle of intersection, because do you remember sine rule? Do you remember cosine rule? Can you prove it? No. Can we go to next page? It was done now? Yeah, it is the same thing. Prove that the sine rule I want you to prove. How to prove it? How to prove sine rule? You have been using sine rule. Then you must know how to prove it. Otherwise, how come you are using that thing? Prophet Gabriel came and said that this is sine rule. It will always work. Or did you prove it? See, ये actually हमने last time ही prove कर दिया था. किया था? नहीं, last class in center ऐसा बता रहा था जब मैं. I proved it already. Let's say this is ABC. This is angle A, of course. This is R. Obviously, this is going to be R sine A. So this is also R sine A. So A is equal to 2R sine A. Similarly, B is equal to 2R sine B. Similarly, C is equal to 2R sine C. हो तो गया proof? Proof तो कर चुके थे. So this is your sine rule. What about just prove this first? Cos A is equal to sine square B plus sine square C minus sine square A upon 2 sine B sine C. How to prove it? How to prove it? First of all, I know something like this. I know how to work on it. How to work on it? Sine square C minus sine square A is sine C plus A into A होता है ना? भूल गए? Sine C plus A into sine 2
Sin B, sin C. Clear? What is sin C plus A? Pi minus B. So it is nothing but gone, gone, gone. So we are left with sin B plus sin C minus A upon 2 sin C. Sin B can be written as sin A plus C. Hence, cos A. Do I have to prove it? No issue. So you know this is nothing but cos A is equal to this. Hence proved. ये prove हो चुका है. Sin square B can be written as this is your cosine rule. So cos A is nothing but it's just extended form of Pythagoras theorem. है ना? अगर देखो तो when your A is 90 degree, cos 90 0. So it means B square plus C square is equal to A square. A is your hypotenuse. Okay, you can prove it. Sine rule, cosine rule, no issue till here. Huh? Okay, next page, next question. See, when you have already sides are given and angle between two sides are given which you have to find, so I can directly apply cosine rule. I can say cos alpha आराम से कह सकता हूं मैं ये बात. ये क्या है? एंगल बिटवीन टू रेडियस. गेटिंग द आइडिया? हमें क्या निकालना था? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. बट आई हैव ऑलरेडी found the angle between two radius. What is the relation between angle between radius and angle of intersection? They are supplementary, so I can directly make it pi minus this angle. Clear? Till here, no issue. Can we come to question number 74? Two circles pass through centers of each other. Let's draw it. This is one circle. This is another circle. They are passing through each other's centers, right? Show that. Find the angle of intersection of this circle. Okay. What this triangle is going to be? Equilateral triangle. So what this angle is going to be? So what is the option going to be? What? B or D? None. The answer is going to be none. Why? Because he is not asking angle between the radius, he is asking angle of intersection, and that is 180 minus angle between radius, and that is 60 degree. So देखो गलती क्या हो सकती है? Clear? Good. If two circles touch each other, find the angle of intersection. I know cos alpha is r1 square plus r2 square minus d square upon 2 r1 r2, right? So I can say theta is equal to cos inverse d square minus r1 square minus r2 square
अपॉन 2r1 r2, कह सकते हैं ना, है ना? When circle is touching each other, two cases are possible. When they are touching externally, when they are touching internally. If I say this is the story, this is R1, this is R2, and D is R1 plus R2, right? So यही ना हुआ, D is R1 plus R2. So इस केस के लिए theta is angle of intersection, right? And this is angle between radius. So I'm just finding angle of intersection. Clear? So I can say cos inverse R1 plus R2 का square minus R1 square minus R2 square upon 2 R1 R2, which finally turns out to be cos inverse 1, which finally turns out to be 0 degree. Okay, so the angle between the angle of intersection is 0, and angle between the centers are radius are 180 degree. No issue till here. Now here it will turn out to be, if this is R1 and this is R2, so D is R1 minus R2. Okay, so theta turns out to be cos inverse R1 minus R2 का whole square, that is minus 2 R1 R2 upon 2 R1 R2, right? Which is finally minus 1, so angle will be pi. Clear? समझ में आया? Internally, externally. If you are not going to say 0 degree or you are not going to say pi, you are going to say both. And you know which case. Externally, angle of intersection is 0. Internally, angle of intersection is pi. Okay? So they can also give you lot information in this form also, that whether touching externally or internally, right? This is how we decrypt it. Now two circles, should we go ahead? 2 minutes left. Okay, now we'll start from 75 is a good number to finish off. So in the next class, we'll start with 76. And then I have been telling you that there is this circle on the power line, right? Which is traveling on this radical axis. The center is traveling to the radical axis. We are talking about that. And we also saw about the radical center and then radical circle, right? And the 76th question is talking about the angle of intersection when it turns out to be 90 degree. We'll observe this thing. We will try to observe that these three are interrelated. They are actually cutting orthogonally. When I say two curves are cutting orthogonally, it means that when I say two curves are cutting orthogonally, it means two curves, their angle of intersection is 90 degree. Okay. So next class, we are going to observe what are the relations, how to find, and what's that circle is which is traveling to the radical axis. And then we are also going to see and observe the property of the radical circle, which that radical circle is the only circle which is going to intersect three non-collinear centered circles orthogonally. That will be the only circle, and that circle is called radical circle. Okay, and the center is called radical center, and the radius is radical radius. The length will be just the power of p with respect to any of the three, because it's going to be equal. Okay, till then, everything you guys are enjoying circle, coordinate geometry. Okay, parabola is going to be more fun, and ellipse and hyperbola will be, you will be master in that after this, because 2-degree curve, you are already understanding all the 2-degree curves properties, right? Okay then, bye-bye.
Good afternoon, dear city coordinators, facilitators, and my dear students of class 11th. Good afternoon. How are you all? Going good? I'm here to convey two things. First of all, I will just confirm from our city coordinators regarding the face-to-face contact program that we are going to organize in January. Please send the consent and confirmation of your center as soon as you can get it from your students. I just want to convey that before 23rd, you just send the list of the students, those who want to come to join our crash course. Because we have to finalize all the boarding lodging arrangement, and accordingly we will do that. So this is my request to all the city coordinators. Those students who have come today, take their confirmation, as well as who are absent today, you just call them and take their consent. Because after getting the consent, we will finalize the list and accordingly we will make arrangement. And now let's come to class 11 girls. So this is my hi to all the girls of all the centers. Tell me how your preparation is going on. Huh? Going on. Okay, what is your dream? What is your dream? To be? Okay, you want to go to IIT. How many of you have the same dream? किस किस का ये dream है? Raise your hand. आपका नहीं है? Don't hesitate. इतना सा हाथ क्यों रखा है? It means you are not determined. If you are raising your hand this much, it means you are determined. So, okay, everyone is determined to go to IIT. Okay, कौन सा rank लेना है? 1 digit? Everybody is laughing. Why? This is not possible? Huh? Okay, then 2 digit or 3 digit. It means 1 to 9 or 10 to 90, 99. Chalo, tell me, how many of you want here? Want तो सबका है, huh? Your preparation is for what? Till now? ये या ये भी नहीं? So first of all, you have to set your dream like, okay, आपका ड्रीम ये नहीं है कि सिर्फ IIT. ड्रीम के साथ what you have to add now. मोनिका मैम क्या ऐड कराने के लिए आई है आज आपको? ड्रीम आपका इट इज गुड, डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड, बट विद दैट यू हैवंट डिफाइंड कि 1 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए या 4 डिजिट चाहिए. 3 and 4 का स्कोप नहीं है. इफ यू वांट टू गो टू ए गुड कॉलेज, आपका क्या होना चाहिए? 2 डिजिट होना चाहिए ना? एग्री कर रहे हो इस बात के लिए? जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा. अगर मैं बात करती हूं 2 डिजिट ड्रीम की, रैंक आपका 2 डिजिट रैंक हो, फॉर दैट आई नो इट इज नॉट इजी. द जर्नी इज नॉट इजी. बहुत सारा हार्डवर्क लगेगा. You have to put lot of pain. You have to put lot of efforts. But believe me, if you will do it, it will be worthy for you. How? Tell me. कैसे अच्छा होगा? अगर आप पेन लगाते हो, you put efforts, you do lot of hard work, then life is going to become beautiful for you. Journey starts here. You are a beautiful girl. Your dream is IIT.
with 2-digit rank. Journey है, no doubt. You have to travel from here to here. It requires pain, I told you, efforts, hard work, and lot of determination. एग्री करते हो? ये डिटर्मिनेशन कैसे आएगी? कैसे आएगी? और ऐसा नहीं है, आप भी जानते हो बहुत सारे बच्चे हर साल यहां जाते हैं, वहां से यहां तक की जर्नी ट्रैवल करते हैं ना? क्या आप उनसे अलग हो? नहीं। माइंडसेट आपका बहुत अच्छा है, पढ़ाई आप बहुत अच्छी कर रहे हो, यू आर स्टडिंग वेरी हार्ड. इट मीन्स कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग योर डिटर्मिनेशन. ढीले पड़ जाते हो. हम क्या करते हैं जब जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारा एंथुजियाज्म होता है हमारे अंदर, यस आई हैव टू डू दिस. लेकिन धीरे 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 कहीं आके आप बैठ जाते हो, कहीं आके आप सो जाते हो, कहीं आके आप छोड़ देते हो, नहीं हो रहा. जबकि हमें पता नहीं होता कि मंजिल हमारी बहुत करीब होती है. इतना आप ऑलरेडी कर चुके होते हो कि थोड़ा सा एफर्ट और लगाने की जरूरत होती है. होता है? तो इट मींस आपको यू हैव टू सेट डिटर्मिनेशन. आपका ये वीक नहीं होना चाहिए. एंथुजियाज्म जिससे शुरू की है जर्नी, उससे आपका खत्म भी करना है. आई नो फॉर दैट यू हैव टू लिव सो मेनी थिंग्स. सोशल लाइफ यू हैव टू खत्म कर दो अपनी. अब फॉर 2 years भी नहीं मैं बोलूंगी अब आपके बहुत कम टाइम रहा है, तो यू हैव टू लीव योर सोशल लाइफ, फ्रेंड्स, टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब छोड़ दो. राइट? क्योंकि ये सब इजी नहीं है लेना, आई टोल्ड यू. तो यू हैव टू लीव योर थिंग्स. कहीं ना कहीं टाइम को कट करोगे तभी तो आप स्टडी में लगा पाओगे वो टाइम. तो कट कहां से करोगे? यू हैव 24 hours. 24 hours में यू हैव टू स्लीप आल्सो, बट एक अच्छी स्लीप के साथ जितना टाइम आपका बचा है, दैट यू हैव टू डिवोट टू योर स्टडीज. फॉर दैट आई टोल्ड यू डिटर्मिनेशन. ठीक है? एंथुजियाज्म आपको रखना है, एंड एक मोटिवेशन आपकी कंटिन्यूअस रहनी चाहिए. सेल्फ मोटिवेशन, आई विल से सेल्फ, आपकी खुद की. आज मैं यहां हूं, आई एम मोटिवेटिंग यू. ओके, जोश रहेगा, मैम ने बहुत अच्छा समझाया, राइट? मैम ने बहुत अच्छा बताया, आई हैव टू डू दिस. लेकिन ये जोश कितने दिन रहेगा? हार्डली फॉर 2 days, 4 days, 5 days के बाद तो मोनिका मैम का चेहरा चला जाएगा. इससे नहीं जाएगा? चलो गुड. बट मोनिका मैम के चेहरे के साथ साथ यू नीड योर सेल्फ मोटिवेशन. एक अंदर से यू नीड मोटिवेशन कि यस आई हैव टू डू दिस. करना है, करना है, करना है. आई थिंक 1 year and 4, 5, 6 month की आपकी ये हार्ड वर्क आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बनाने वाली है, यू कांट इमेजिन. इट इज अप टू यू कि यू वांट टू अर्न 40,000 या 4 लाख, या फिर मैं इसमें जीरो और ऐड करती जाऊं. मैं ये मंथली बात कर रही हूं. There are students of hardly 21 years, those who are earning 40-50 lakhs per month only by going into IIT. अब पता रिवर्स नहीं हो सकता टाइम. आज आपके पास you have the opportunity, you can do it. लेकिन अगर मैं प्रियंका को बोलूं, प्रियंका इज वेरी मच इंटरेस्टेड, उसे आज मैं आपके जितना टाइम दूं, 1.5 साल दे दूं, तो शी कैन डू वंडर, बट शी कांट गो बैक. मैं भी नहीं जा सकती, मेरा भी मन है मुझे कोई दे दे 1.5 साल, मैं मेहनत करके दिखाती हूँ, लेकिन मुझे वो टाइम नहीं मिलेगा. बिकॉज इन आवर टाइम वी वर नॉट हैविंग सो मच अपॉर्चुनिटी. इतना एक्सपोजर हमें नहीं मिला. इवन ये सिटी कोऑर्डिनेटर्स जो मेरी बात सुन रहे हैं वो भी एग्री करेंगे कि वो भी यही कहेंगे अपने स्टूडेंट्स को.
मैं नहीं चाहती कि एक दिन आप यहाँ खड़े होकर किसी को ये बोल रहे हो कि मैं वापस नहीं जा सकती। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू आर हैविंग टाइम इनफ एंड यू आर हैविंग सोर्सेज आल्सो। आज आपको उड़ान मौका दे रहा है, राइट? आप घर में स्टडी करते हो, इवन स्कूल में यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, सो यू आर हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, बट सेल्फ मोटिवेशन इज नीडेड फर्स्ट ऑफ ऑल। जब तक ये सेल्फ मोटिवेशन यू विल हैव, आपकी जर्नी विल बी वेरी इजी। So every time you have to remind yourself. What's your name? Yashika. Yashika will remind herself, Yashika, you have to do it. Yashika, you have to do it. This thing you have to remind yourself. So everybody will say that at any cost, I want a 2-digit rank. Speak with me. At any cost, I will get 2-digit rank in for JEE or advanced, you can say that. So at any cost, this line you have to remind yourself daily. शीशे के सामने सब लोग खड़े होते हैं ना, मिरर के सामने सुबह, you have to make yourself ready. तो उस टाइम whenever you will see mirror in the morning, you will remind yourself by seeing your face that I have to do this. For that, for the whole day, you have to work very hard. Don't spare your time in useless things. Okay, clear? And for this, I will suggest you some tips also. One thing is that there is no shortcut to your hard work. If you have to work hard, it means you have to work hard. Don't think that there is any shortcut. There is no shortcut to your hard work. Second thing is that your hard work should have a right direction. Right direction means you should know that how you are going to proceed your study, how you are going to learn a concept. It means you must have a timetable with you. Everybody is having timetable now? Are you following it blindly or not? No. Blindly you are not following it. You have made the timetable, but ठीक है, किसी दिन आपने पढ़ लिया, किसी दिन नहीं पढ़ा, वो नहीं होना चाहिए. Timetable should be fixed. Everything should be planned. Before sleeping, it should be in your mind that for the next day, what you are going to study in physics, in chemistry, in maths. It should be in your mind. Okay, in physics, I'm going to study this chapter from this book. Everything should be clear in your mind. जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं और जो नहीं करते हैं, उनमें फर्क यही होता है, उनकी प्लानिंग जो होती है वो सही नहीं होती है. If there will be lack in your planning, आप सफर करोगे. प्लानिंग कैसी, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि हाउ यू हैव टू प्लान. फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर में कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट को किस बुक से रेफर करना है. एनसीईआरटी इज ए बेस बुक, वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ विच रेफरेंस बुक यू आर गोइंग टू फॉलो, वो बुक कौन सी देखेंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व टुमारो. हर चीज माइंड में फिक्स करके सोइए, नेक्स्ट डे उसको इंप्लीमेंट करिए. कितना इजी है. फिक्स होगा माइंड में तो यू विल इंप्लीमेंट इट. जो कुछ फिक्स नहीं होगा तो क्या होता है, आप उसी समय प्लानिंग करते हो, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती है. क्यों? उस टाइम क्या होगा, कुछ काम आपको याद आ जाएगा, कुछ मम्मी आपको कह देगी, तो आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी. पहले से प्लान होगा तो नो, यू विल से नहीं मम्मा, आई हैव टू डू दिस थिंग, प्लीज स्पेयर मी, यू कैन सेंड एनीबडी एल्स टू द मार्केट, आई विल नॉट गो बिकॉज दिस थिंग इज इन माई माइंड एंड आई हैव टू डू इट. So before sleeping, everything should be in your mind कि what you are going to do tomorrow. Clear? It is called as right direction to your hard work. मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है, बहुत मेहनत करता है. तो मेहनत नहीं सिर्फ करनी है, मेहनत को स्मार्टली करना है.
हार्ड वर्क कैसा होना चाहिए? स्मार्ट वर्क होना चाहिए एंड विद अ राइट डायरेक्शन. ओके, next step is that concept building. Strong concept building. If you are studying a concept, it should be strong enough. बीच का रास्ता मत लो. पढ़ लिया चलो हो गया. मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. I was in class, I think 7th or 8th. I was studying like this. घर में I was sitting and ऐसे पढ़ रही हूँ. फिर इधर देख रही हूँ थोड़ा सा, हाँ उधर टीवी में देख लिया, उधर मम्मी और कुछ सब बातें कर रहे हैं, उधर भी देख लिया. देन आई एम अगेन कमिंग टू माई बुक, थोड़ा रीड कर रही हूँ. मुझे नहीं पता था, आई वॉज नॉट अवेयर, बट माई मम्मा वॉज ऑब्जर्विंग मी, माई बिहेवियर, कि हाँ आई एम स्टडिंग. एंड इन बिटवीन आई वॉज लॉस्ट ऑल्सो. आप लोग भी करते हो, जैसे पढ़ते पढ़ते यू आर लॉस्ट, समवेयर माइंड इज गोइंग. होता है ना, होता है. उस टाइम आपको कोई फिल्म भी याद आ जाती है, दिलवाले आने वाली है, ओके कब देखने जाएंगे, है ना, समथिंग लाइक दैट. आज कौन सा सीरियल आएगा? आज नागिन आएगा, ओके मुझे देखना है. ये होता है, इट हैपेंस विद अस कि व्हेन वी आर स्टडीिंग कुछ ना कुछ माइंड में चलता है. तो आई वाज डूइंग दिस एंड दैट, देन माय मदर सेड, मोनिका व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड, मम्मा आई एम स्टडीिंग. शी सेड, नो यू आर नॉट स्टडीिंग, इट्स बेटर टू क्लोज योर बुक एंड कीप इट ऑन द टेबल बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम. आप अपने माइंड को बोल रहे हो कि यू आर स्टडिंग, दिल को तसल्ली दे रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, बट इन फैक्ट यू आर नॉट स्टडिंग. तो दिस इज कॉल्ड ए डिफेंस मैकेनिज्म. क्या बोलते हैं इसको हम? डिफेंस मैकेनिज्म. क्या होता है? जिसमें हम अपने दिल को, अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल वी आर नॉट डूइंग दैट. तो माई डिफेंस मैकेनिज्म क्या था उस वक्त? अपने आप को आई वाज शोइंग कि आई एम स्टडिंग. आई वाज शोइंग टू माई मम्मा that I am studying, but in fact I was not studying, I was wasting my time. अगर वो आधा घंटा मैं बुक को ऐसे लेके बैठी हूँ, that is wastage of my half an hour. Comparatively अगर मैं उसे 15 मिनट में अच्छे से पढ़ लेती हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है मेरे माइंड में, तो that 15 minute is more fruitful than wasting my time for half an hour. So you have to always think when you are studying, your study should be of quality, not of a quantity. Don't show to others. What we used to do, we used to always show off. We are in a practice of showing off कि we are studying. Okay, mama will see, papa will see. बेटी तो बहुत पढ़ रही है, बेटा बहुत पढ़ लिया आपने. लेकिन वो 4 hours में से actual कितना पढ़ा आपने? अगर वो आप एनालाइज करना, आप शुरू करना, अब आपको ना मेरी बात याद आया करेगी जब आप पढ़ोगे. अच्छा, मोनिका मैम ने कहा था एनालाइज करो. अगर मैंने 3 hours पढ़े हैं तो उस 3 hours में से एक्चुअल कितना पढ़ा है मैंने, कितने hours का पढ़ा है. तो वो एक्चुअल धीरे धीरे आपका प्रॉपर उतना ही आना चाहिए. 4 hours के लिए बैठे हो तो 4 hours का ही माइंड में जाना चाहिए. 3 hours 59 minutes का भी नहीं, पूरा 4 hours मीन्स 4 hours. ये प्रैक्टिस बनाइए. ये मैं आपको बता रही हूँ, ये हम सबकी वीकनेस है, सबकी है. तो कंसंट्रेट योर माइंड. ओके, आप पढ़ने लगे हो तो आप अपने माइंड को बोल के रखिए, नहीं डू दिस. नहीं मन करो, लिव इट. लेकिन जब तक पढ़ो, कंसंट्रेट होके पढ़ो, क्वालिटी से पढ़ो. डोंट गो फॉर टू क्वांटिटी. मैंने आपको आज एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, एग्जाम्पल बताया. डोंट गो टू क्वांटिटी, गो टू क्वालिटी. द नेक्स्ट टिप इज स्पीड विद एक्यूरेसी. टू क्लियर ऑल द syllabus, right, to do all the questions of JEE, you need accuracy, right? But do it, for doing it faster and faster so that आपके सारे questions हो जाए, आप सब attempt करो, you need speed also. And for both speed and accuracy, what you need? Good practice. Simple practice word नहीं चलेगा. Good practice. Do many of questions daily. Do it number of times. अगर गलती हो रही है तो do it number of times. But practice many questions as you can daily, so that concept should be clear in your mind, right? So your concept should be strong.
You have to pay attention to your quality and good practice you have to put in. Right? And there should be a burning desire in you, as I told in the beginning also. करना है तो करना है, करना है तो करना है. 12th क्लास में भी मैंने उस दिन बोला था, बीच का रास्ता मत अपनाओ. आज भी मैं आपको बोल रही हूँ, इफ यू वांट टू डू इट तो करो, अदरवाइज लिव इट. व्हाई यू आर कमिंग ऑन सैटरडे एंड संडे? यू आर स्टडिंग फॉर लाइक फॉर एग्जांपल 7 days in a week. पेरेंट्स साथ में आए हैं, दे आर सिटिंग देयर, दे आर रोमिंग अराउंड, है ना. अभी तो और ठंड बढ़ने वाली है. दूसरों को मत दिखाओ. ये मेरा एक मंत्र याद कर लो, दूसरों को मत दिखाओ. जो करना है डू इट फॉर योर सेल्फ. और योर सेल्फ के लिए तो वही है ना कि अगर वहां जाना है तो पढ़िए, अदरवाइज लीव योर बुक्स, बंद कर दीजिए. नेक्स्ट सैटरडे से मत आना, बोलना मोनिका मैम बाय बाय, आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई कांट डू दिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू डू इट, देन डू इट. सेकेंड ऑप्शन बीच में माइंड में नहीं आनी चाहिए. ठीक है? बीच का रास्ता नहीं, जाना है तो यहां से यहां जाना है. बीच में आके बैठने वाला काम ठीक नहीं है. ये तो मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया लाइफ में. समझ रहे? करना है तो अच्छे से करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं आनी चाहिए आपकी. ये हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो इतना पढ़ना पड़ रहा है, घर में भी काम करना पड़ता है, मम्मी की भी हेल्प करनी पड़ती है, स्कूल का भी बहुत काम हो जाता है, होमवर्क बहुत मिलता है. ये सब एक्सक्यूजेस हैं. अभी आई टोल्ड यू डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म है. तो ये मेरा वर्ड याद रखना, डिफेंस मैकेनिज्म. इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, ये डिफेंस मैकेनिज्म छोड़ दो, एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए. एक्सक्यूजेस क्यों बोल रही हूं? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये सब करते हुए वहां तक पहुंचते हैं. वो होमवर्क भी करते हैं, वो घर में पेरेंट्स की हेल्प भी करते हैं, वो बहुत दूर ट्रैवल करके स्टडी करने भी जाते हैं. आफ्टर दैट दे अचीव देयर गोल. तो हाउ दे आर एबल टू अचीव देयर गोल? उनकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बीच में कुछ नहीं आता. ये छोटी छोटी एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल भी नहीं आती. समझ रहे? तो करना है तो फिर अच्छे से करो. अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. मैंने साइको के पेपर दिए थे. मेरा पढ़ने का मन कभी भी खत्म नहीं होता, मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ. एमए साइको के मैं पेपर दे रही थी, दिसंबर में एग्जाम्स थे. मैंने यहां से भी कोई छुट्टी नहीं ली. आप लोग देखते हो हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे करते हैं ना मेहनत. उड़ान में तो दैट टाइम उड़ान स्टार्ट हुआ था, हम लोग यहाँ से रात को 8-8, 9-9 बजे, चंद्र प्रकाश एम आई राइट, 8-8, 9-9 बजे हम लोग यहाँ से जाते थे घर. जाने के बाद मैं घर का भी सारा काम करती थी और फिर मॉर्निंग में एग्जाम देके 1:30 पे एग्जाम खत्म हो जाता था. मैं छुट्टी नहीं लेती थी. 1:30 अगेन मैं फिर ऑफिस में आती थी. ऐसे करके मैंने अपने सारे एग्जाम दिए विदाउट टेकिंग एनी लीव. और वो भी एग्जाम देने के बाद घर नहीं जाती थी, एग्जाम देने के बाद ऑफिस में आती थी. बिकॉज मैंने अपने माइंड को ये एक्सक्यूज नहीं दी कि नहीं मुझे छुट्टी लेनी है, मेरा ये वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मुझे करना है तो आई हैव टू प्लान कि हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. रात रात को बैठ के पढ़ो. मैंने रात रात को बैठ के पढ़ा, बिकॉज घर जाने के बाद आप घर का काम करोगे तो कब पढ़ोगे? 12 बजे के बाद. 12 बजे के बाद फिर पढ़ के आप 4 बजे सो जाओगे 2 घंटे के लिए, सो दैट मॉर्निंग में फिर उठ के एग्जाम देने जाओ. लेकिन दैट आई हैड डन. तो यू हैव टू मेक योर ऑन वे, यू हैव टू मेक योर ऑन स्ट्रेटेजी. आपको अपनी टैक्टिक्स लगानी पड़ेंगी टू अचीव योर गोल. और पूरे कॉलेज में मैं ही एक लड़की हूं जिसने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, बाकी सबकी कंपार्टमेंट्स हैं, जबकि वो लोग घर में बैठ के स्टडी कर रहे हैं. See the difference. I'm not praising myself, but I'm telling you कि my determination helped me. उन लोगों की उतनी determination नहीं है. Clear? तो ये सब चीजें ध्यान में रहेंगी जो मैं आपको बता रही हूँ. तो burning desire रखिए अपने माइंड में कि you have to go to IIT with 2-digit rank. Clear? And for that, we are also starting some strategy. First of the strategy we are going to start from our side is that we will provide you now 5 questions of every subject.
Today you are going to get 5 questions from physics, 5 from chemistry and 5 from maths. These 15 questions आप घर में बैठ के करेंगे Monday to Friday. Clear? आता है नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए. On Saturday you will submit your answers to your facilitator, right? Your facilitator will get an answer key from CBSE. For example, from here, Priyanka will help you. But in other centers, I am telling them कि they will just submit their answer key to their facilitator, and their facilitator will get answer key from CBSE on Saturday itself. Facilitator will check the answer of your students, and then they will inform us about what is going on. Clear? So in this way, and you will get the answer key on Sunday. Your number as well as answer key on the Sunday. This way you are going to practice 15 questions every week. This is one of the strategy, that is we are going to start from today itself. Clear है? अच्छा रहेगा सबके लिए? Second thing हम लोग क्या करेंगे? We will start problem solving session for 1 hour 25 minutes. अभी तो नहीं, coming week में देख लेंगे. We will start. उसमें that particular 1 hour 25 minutes will be for problem solving. For example, we will start from chemistry. Then you have to revise all the content done so far in chemistry. You will bring the queries, questions. You will submit your question to your facilitator in the same way, and we will give that questions to the resource person. That particular resource person will give answers to your queries. From all the centers, we will collect the queries, and the resource person will resolve the queries. Okay, because when you are going home and you are studying, you are facing with some problems. जब आपको उन problems के answers भी मिलने शुरू हो जाएंगे, तो it will be helping hand for you. Clear? So here I will land by saying that, okay, about tablets and study material, I just want to convey that for the tablets, you are going to get it very soon. We have received the sample also. So very soon we are going to send the tablets to every center. And regarding the study material, most of the students have got the study material. Otherwise, we are just sending. Okay, it will be dispatched in this coming week. Now, we will dispatch the study material in this coming week. So those centers who haven't received the study material for the new girls, we are sending it very soon. You will receive the tablet also, but just concentrate yourself in study now. What things I have told you today, it should be in your mind daily. या तो मेरे सारे वर्ड्स याद कर लेना या मोनिका मैम का फेस याद कर लेना. फेस याद करते ही कौन कौन से पॉइंट्स थे, इट शुड कम इन योर माइंड. 2 digit रैंक तो भूलना मत. डोंट फॉरगेट 2 digit रैंक. करना है तो करना है. ये दिस स्पिरिट शुड बी इन योर माइंड. ओके, सो स्पीक लाउडली एट एनी कॉस्ट. At any cost, I will get 2 digit rank in JEE. Chalo, thank you so much, girls.